Good morning to all of you. Good morning. Good morning. Right. So, so today we are going to start a new topic, and that topic is very important. Clear? Now, the name of this topic is I have already shared with you. That is revolts and rebellions. One of the most important topic in modern Indian history. That is revolts and rebellions. Right? Revolts and rebellions. So obviously, one of the most popular revolt in Indian history. Clear? And that is a debatable topic also. That uh, should we call it as the revolt or it should be considered as the first great war of Indian independence? That was revolt of 1857. We all know this. So this revolt is very much important. Revolt of 1857. This is a debatable topic. Okay, this is still debatable. That okay, what should we call it? It was a revolt or it was first great war of Indian independence, right? So this topic is very important. This topic is very important because after this revolt important changes took place with respect to the administration of India, with respect to the political system of India. We all know that in 1858 what happened? Crown rule replaced company rule. Clear? So one of the most important factor behind this was a revolt of 1857 also. So this topic we need to discuss in details. Clear? In details. This topic we need to discuss in details. You must draw this sketch, this plan which I am drawing. This topic we must need to understand in detail. Now there are two more segments which we need to study. One segment is since we all know that colonial rule in India, right, established in which year? 1757. And this is which year? 1857. 1857. So obviously, this was what? Almost 100 years of colonial rule in India. 100 years of colonial rule in India. And the sole purpose, basic purpose of this colonial rule was what? The basic purpose of this colonial rule was to exploit different group of Indians, to economically exploit India. So obviously dissatisfaction will arise as a result of this colonial exploitation. This is very simple. 100 years of colonial rule will do what? Obviously, it will create a sense of dissatisfaction in the mind of Indian people. And what will happen? The outburst of this dissatisfaction will be in the form of revolts and rebellions. What does it mean? It means that this revolt of 1847 is not the first revolt in India in colonial rule. It is one first major revolt, but before this, there are a lot of revolts and rebellions. So we need to understand this also that okay, revolts and rebellions between this period, between 1757 to 1857, revolts and rebellions between this period. So this is what phase 1 of revolts and rebellions. This is what the most important topic. Now after 1857 what will happen? Crown rule will come to India, and this crown rule is in which year? 1858. And independence of India in which year? 1947. This period is also what? The phase of colonial rule. Colonial rule to ye bhi hai. This period is also the phase of colonial rule. But here who is ruling? Crown is ruling. Crown rule. This is what? Crown rule. Now tell me one thing, that the basic purpose or objective of colonialism will always remain the same. वो हमेशा एक ही रहेगा. Even if company is ruling and crown is ruling, okay, impact will be the similar, because this is the fate of a colony. जब अमेरिका को नहीं छोड़ा तो इंडिया क्या चीज है? In America, about 2/3 people were British migrants. Clear? So here also exploitation will take place. So if exploitation will take place, what will happen? Revolts and rebellions plus
In this phase, we notice one another important thing, that is formation of Indian National Congress in year 1885, and after this, the national movement will start. And in this national movement now, peasants will come forward, they will contribute. Tribals will come forward, they will contribute. Clear? Students will contribute. You can say that even the local rulers, some of the princely states will also come forward and will do their contribution. So what do we see? That in this phase, okay, again we see that continuance of revolts and rebellions. This is seen, continuance of revolts and rebellions plus, right, progress of Indian national movement. We see also what? Progress of Indian national movement. And in this Indian national movement, we see the contribution of different groups like the peasants, like the tribals, etc. Different groups. So we have to integrate all these concepts together. इन सबको क्या करना है? Integrate करके समझना है. Okay. So in our class, what I will do? I will first discuss all the concepts with you. Got it? I will discuss the name of the important revolts and rebellions. And once you discuss the entire concept, once you are familiar, once you are successful in classifying all the thoughts and informations in a, okay, you can say that proper chronological order, after this you will do what? You will practice MCQs. इसके बाद आपको क्या करना होगा? You will have to practice MCQs. In your notes you will leave at least 2 or 3 pages, and you will update all the years and important revolts and rebellions that has been asked in your exam. ठीक है? Whether it is CAPF exam or state PCS exam or UPSC exam, कहीं पे भी कोई अगर revolts and rebellions पूछा गया है, year, area, okay, when it took place, or important leaders in that revolt and rebellion and the main causes, this we need to, okay, collect. Okay, so I will cover almost 90% here, but still, okay, you will do practice, you will get a few new facts, so you must update in your क्लास नोट्स इटसेल्फ. ठीक है ना? तो कॉन्सेप्ट के बेसिस पे यहाँ आपको कुछ अपडेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. राइट? फैक्ट्स भी ज्यादातर हम कवर कर लेंगे. थोड़े बहुत क्वेश्चंस जो आपको नए दिखेंगे क्वेश्चन बैंक में, उनको आप अपने क्लास नोट्स में अपडेट कर लेना. ठीक है ना? इन बुलेट फॉर्म, एंड दैट विल बी हेल्पफुल फॉर यू इन रिवाइजिंग द concepts. Now we are coming to the topic. So first I will discuss some basic concepts. So write basic concepts and then we'll enter the topic. Basic concepts. Basic concepts. Basic concepts. Clear? We are talking about revolts and rebellions. We are talking about revolts and rebellions. Right? Revolts and rebellions. And we are discussing which phase? So we are discussing colonial rule. We are discussing colonial rule. Colonial rule has two parts, that's all we know. First part 1757 to 1857, 58, and the second part is 1858 to 1947. This first part is what? This first part is company rule, and the second part is what? The second part is crown rule. So the concept is very simple. First part is company rule and the second part is crown rule. ठीक है? Is it clear? This is the information. Okay. Now I am asking a simple question, that this revolt, okay, what is the main purpose? What is the main reason behind revolts? किसी भी revolt के पीछे reason क्या होता है? For example, if you have some grievances, concerns, अगर आपकी कुछ शिकायतें हैं, and if those concerns or grievances are not addressed by the system in a sensitive manner, what will happen? ठीक है? आप समझो इस बात को कि आज के टाइम में भी, at this time also, even if we have some problems or the concerns or the grievances, so in independent India, in democratic system, what happens? Our concerns are addressed by the government. Got it? Government forms committee to examine our demands. After this, the government tries to incorporate those demands, and then the government will make programs and policies. Got it?
So if the concerns of the people are not addressed in a sensitive manner by the system, by the establishment, by the government, the people will become dissatisfied, right? And if this happens multiple number of times, okay, if your exploitation will keep on increasing and there is no one to listen to your miseries, though no one to address your miseries, your pain, your suffering, what will happen? Ultimately, obviously, it will result in the form of revolts and rebellions. Okay. In colonial rule, what was happening? The main focus of the administration was on the collection of revenues to maximize the revenue collection. Government का पूरा ध्यान कहाँ है? To maximize the revenue collection. It means the government is not ready to take its responsibility. What is the responsibility? For example, if you are collecting revenues from the peasants, so it is the responsibility of the government to provide irrigation facilities. It is the responsibility of the government to give them relaxation at the time of disasters and famines. It is the responsibility of the government, but the government was not okay looking after its responsibility. Only focus on increasing or maximizing its revenue collection. So what will happen? At one point of time, the peasants will oppose this. Got it? What should be the duty of the government? Okay, there are local handicraftsmen, okay, or artisans. So it must be the duty of the government that the government should do what? Government should give official help and support to the local artisans. ठीक है? जो now the government was not doing that. Instead, the government was okay playing an important role in promoting decline of handicrafts in India. ठीक है? By using unfair tariff policy, by promoting westernization. तो इससे क्या होगा? Artisans भी dissatisfy होंगे. What about the traders, merchants? Clear? Previously, India was an exporter of manufactured goods or textiles. Now it has become big importer of manufactured goods or textiles. Those industrial towns or cities, clear? Medieval India, there were so many urban centers, or you can say that important urban centers in medieval India, in ancient India. All those urban centers will start declining and new urban centers will start evolving. ठीक है? ये पूरा का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है सिस्टम का. मथुरा, काशी, राइट, their importance will start declining. Now Bombay, Calcutta, right, Madras Presidency, they will emerge as an important center of trade and commerce. So if a rich urban center will decline, जहाँ पे पहले बहुत ज़्यादा trade and commerce था, obviously the employment will be affected. The people who are there, they will start losing opportunities to do trade and commerce. So this all was happening in the colonial rule, and that's why we see the dissatisfaction in the form of revolts and rebellions. Clear? So there are different groups in India. Almost all the people of India were dissatisfied. कौन खुश होगा भला colonial rule से? मुट्ठी भर लोग, handful of people who are getting benefits due to the British presence in India. Otherwise, okay, you can say that the British were claiming that in India we are the liberators. We are here to just ensure the benefits of this rule to the Indian people. हम Indian लोगों को civilized बनाने आए हैं. But you are doing what? You are morally validating your colonial presence in India. But after few years, after 5 years, 10 years, 15 years, 20 years, the people will get enlightened. They will start realizing that your claims are hollow. Okay, whatever you are claiming is baseless, right? There is no, you can say that you are claiming something else, and practically what you are doing, your policies are completely different from that. So the people will get some enlightenment as a result. लोगों का enlightenment होगा. Okay, now different group of Indians were exploited as a result. Now I am asking you some group of Indian people. सबसे पहले let's talk about the agriculture and the peasants. ठीक है? Now peasants were highly dissatisfied. तो देखो, different group of Indians were exploited and they were dissatisfied. For example, the most important group was the peasants, right? This peasants. Now we will try to discuss here what are the reasons for the dissatisfaction of peasants in colonial rule. What are the reasons for the dissatisfaction of peasants in colonial rule? Clear? We need to understand a few points.
Now, I am asking you that what could be the reasons for the dissatisfaction of peasants in this colonial rule. Now suggest me a few points. बताओ peasants क्यों dissatisfied? Very good. लिख हाँ एक मिनट मैं लिखता जाता हूँ points. It means you are saying that high rates of revenue. High rates of revenue. ठीक है? High rate of revenue. Obviously it was very high. Ultimate burden lies on the shoulder of the peasants. Got it? The peasant will not be able to make savings. Even it was difficult for the peasant to maintain 2 meals a day. ठीक है? So obviously they will be dissatisfied. Yes, second point. Hmm. Yeah, yes, Akash, please repeat it once again. Exactly. It means we can say that, okay, read this, okay, no official support. Official support here means government support. No official support or no relaxations. ये प्रीलिम्स में क्वेश्चन भी आया था ना ऐसा, ऑफिशियल सपोर्ट और रिलैक्सेशन वाला इस बार. नो ऑफिशियल सपोर्ट और नो रिलैक्सेशंस टू peasants during drought and famines. During drought and famines. Got it? Can we say that no humanitarian assistance also? Yes. No humanitarian assistance we can say. और एग्जाम में ऐसे ही लिखना है, डोंट राइट द फुल सेंटेंसेस इन मेन बॉडी, अदरवाइज यू विल नॉट बी एबल टू कंप्लीट द आंसर, पूरा लिख नहीं पाओगे. गॉट इट? नो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, दिस इज वन पॉइंट. कोई ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस नहीं है. ओके, नो ऑफिशियल सपोर्ट. एंड व्हाट अबाउट द, फॉर एग्जांपल ये भी हो सकता है कि लैंड रेवेन्यू रेट्स को रिलैक्स किया जा सके या मिनिमाइज किया जा सके, ऐसा कुछ हुआ? नो. No relaxation of land revenue rates even at this time. Okay, land revenue rates were not minimized or they were not relaxed. ये भी है. No official support का मतलब है, right, that land revenue rates, okay, were not lowered. इनको कम नहीं किया गया. They were not lowered or we can say that they were not relaxed. उनको relax नहीं किया गया. So that means the government is not giving any official support. What could be the third point? एक और इससे जुड़ा हुआ लिख सकते हैं कि द, yes, that is the point, but यहाँ पे we can add one more point, that is, okay, was the government very much focused on the land development works or irrigation, providing irrigation facilities to the peasants? No. तो यहीं पे इसको लिख लो, because here we are talking about what? Official support, so it will be better we add one more point. So write one more point that is related to this official support. इसको भी लिख लो. Read this. Okay. Read this. No proper attempts were made. No proper efforts were made. No proper efforts were made. No proper efforts were made for the promotion of land development works. For the promotion of land development works. No proper efforts were made for the promotion of land development works. No proper efforts were made for the promotion of land development works or to provide irrigation facilities. Provide irrigation facilities. यहाँ पे मैंने ये वर्ड क्यों लिखा है, no proper efforts? Because the government did what? Limited efforts. ठीक है, क्योंकि ऐसा एग्जाम्पल तो मिलता ही है कि फेमाइन कमीशन बनाया था, इरिगेशन के लिए काम किया था, तो वी कैन नॉट से दैट इट वाज कंप्लीटली वैक्यूम. पूरी तरह से वैक्यूम था ये कह नहीं सकते. इट वाज हैविंग सम लिमिटेड एफर्ट. कुछ लिमिटेड एफर्ट तो था ही, दिस वी कैन एक्सेप्ट हियर. गॉट इट? समझ गए इस बात को? ठीक है, इट्स वेरी इजी टू रिलेट. ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट. अब आप बताओ कोई दूसरा पॉइंट जिसको हम रिलेट कर सकें. यस, हाँ, right, brutal methods for, very good point. So write this point. Okay, right, third point, right, coercive means or forceful means of revenue collection. Coercive means or forceful means of revenue collection. The company officials had appointed luthiers means, okay, the Indian people, they were the Indian people appointed by the company, okay, to forcefully collect land revenue from the peasants. Okay, so this forceful
collection is also one such problem. ठीक है ना? Okay. If you are a peasant and if you are not paying the revenue on time, so this might be possible that you will be jailed, you will be brutally tortured. And there is one more point that we can associate with this, and what is that? That is also very interesting. That if you don't have the money to pay the land revenue or the rent, okay, there is a choice. And what is the choice? The company officials are coming with whom? The company officials are coming with, okay, batao, class of money lenders. A new class will emerge, class of money lenders. And they will do what? They will offer you the money and they will charge very high rate of interest. तो अगर आप अब आपने कहा कंपनी ऑफिशियल से कि मेरे पास पैसा नहीं है, नाउ यू विल, द कंपनी ऑफिशियल विल से दैट मनी लेंडर से कर्जा ले लो, नहीं है तो, और अपना उसका हिसाब आपस में सेटल करते रहो. And in this way, what will happen? Very high rate of interest will be charged. And very good, Shatakshi, Pooja. This will do what? Okay, debt trap. This is a debt trap. This is also called vicious cycle of debt. कर्ज का एक ऐसा दुष्चक्र है, vicious cycle of debt, जिससे किसान कभी भी बाहर नहीं आ सकता. तो इससे डिससेटिस्फेक्शन तो होगा ही. पहले कंपनी ऑफिशियल्स टॉर्चर कर रहे हैं. नाउ हु विल टॉर्चर देम? मनी लेंडर. मनी लेंडर हर दूसरे दिन आ जाएगा कि भाई हमें हमारा पैसा वापस करो. राइट? सो राइट दिस पॉइंट ऑल्सो. राइट. क्लास ऑफ मनी लेंडर्स. क्लास ऑफ मनी लेंडर्स. क्लास ऑफ मनी लेंडर्स. ब्रैकेट में लिख लेना, important, or they were important associates of EIC officials. Class of money lenders. They were important officials of money lenders. Class of money lenders. Sorry, they were important officials of EIC officials. Okay, will also be another element who will ensure the exploitation of the peasants. They will also be one medium. They are also another element who will do what? Who will exploit the peasants. Got it? Okay. And another point, commercialization of agriculture. Pooja, that is also very important point. Commercialization of agriculture was forced in nature or not? बताया था ना आपको, forced commercialization. तो जबरदस्ती किसी से कोई काम करवाओगे, और वो पूरा टॉपिक मैं आपको बता चुका हूँ. नीज एंड रैयती मेथड याद आया कुछ कि हाउ पीजेंट्स वर ट्रैप्ड. ओके, सो राइट दिस. फोर्स्ड कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर. Forced commercialization of agriculture. This is also another reason. This is also another reason. Got it? Is there एक और पॉइंट हम ऐड कर सकते हैं? वो क्या है? देखो, in areas of permanent settlement, what will happen? The ownership rights of the land will be changed. Who will be the owner of the land? जमींदार. तो peasants क्या हो जाएंगे? Peasants will become landless. They will become renters on their own land. तो इससे बड़ी दुख की बात क्या हो सकती है? Got it? ठीक है. You lost your ownership rights on your land. Okay, this is also one reason. In those areas where permanent system of settlement was applied. So write this point also. In PSS areas, the independent peasants lost their land ownership rights. Very important point. In PSS areas, the independent peasants lost their land ownership rights. Lost their land ownership rights. The independent peasants lost their land ownership rights. From PSS we can relate one more point. आकाश, एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं देखता हूं कौन बता पाता है. बताओ. PSS से ही रिलेटेड है, एक्सप्लॉइटेशन से रिलेटेड है. अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट, एग्रीकल्चर वाज नॉट प्रोडक्टिव. बिपिन ठीक है. और कुछ एक बात याद आ रही है आपको जो मैंने बताया था, सनसेट लॉ जब अप्लाई होगा, सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट आउटसाइडर्स विल कम एंड विल परचेज द जमींदारी राइट. तो इससे कौन सा सिस्टम डेवलप होगा? सब इन्फ्यूडेशन एंड एब्सेंटी लैंडलॉर्डिज्म. और सब इन्फ्यूडेशन और एब्सेंटी लैंडलॉर्डिज्म का मतलब क्या है? बता चुका हूं. इससे मिडिल मैन बढ़ जाएंगे
और जब नंबर ऑफ मिडिल मैन विल इंक्रीज तो क्या होगा, एक्सप्लॉइटेशन विल ऑल्सो इंक्रीज. सो राइट दिस पॉइंट ऑल्सो, एंड व्हेन यू विल राइट दीज पॉइंट्स ना, दिस विल मेक योर आंसर डिफरेंट फ्रॉम द अदर स्टूडेंट्स. मेरी बात समझो. दूसरे बच्चे क्या लिखेंगे, हाई रेट ऑफ लैंड रेवेन्यू, peasants were beaten and tortured. तो your answers must be a little bit different from the other students. तो थोड़ा सा आपको effort डालना पड़ेगा. So write this point. Okay, right. Okay. ऐसे अब देखो, ये पूरा सेंटेंस लिखने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे एक स्ट्रक्चर डाल सकते हो. परमानेंट सिस्टम ऑफ सेटलमेंट, सनसेट लॉ. सो ये एग्जाम में अगर आपको लगे कि वर्ड आपके पास लिमिटेड है और फिर भी वो पॉइंट लिखना है, तो क्या करना है, यू विल फॉलो दिस मेथड. ये सारे आंसर राइटिंग के टेक्निक्स हैं, सीखो इस बात को. हर बात हम लिख नहीं सकते सब्जेक्टिव वे में एग्जाम में, दिस इज नॉट पॉसिबल. बट जैसे ही हम एग्जामिनर को एक मैसेज देंगे कि भाई ये पॉइंट में जान, एग्जामिनर समझ जाएगा. पीएसएस सनसेट लॉ, देन यू विल राइट व्हाट, सब इन्फ्यूडेशन. सब इन्फ्यूडेशन, बताओ एग्जामिनर समझ नहीं जाएगा अगर आपने ऐसा लिख दिया तो. एब्सेंटी लैंडलॉर्डिज्म, एब्सेंटी लैंड लॉर्डिज्म, ठीक है. यू विल राइट नंबर ऑफ मिडलमैन विल इंक्रीज, नंबर ऑफ मिडलमैन विल इंक्रीज. देन यू विल राइट हियर अल्टीमेट बर्डन ऑन द पीजेंट्स ओनली. अल्टीमेट बर्डन किस पे होगा, बर्डन ऑन पीजेंट्स ओनली. क्लियर. नाउ दिस ऑल्सो शोज अ साइकिल ऑफ एक्सप्लॉइटेशन. ठीक है, कि पीएसएस से क्या होगा, सनसेट लॉ विल अप्लाई, सनसेट लॉ विल अप्लाई. और सनसेट लॉ से क्या होगा, सब इन्फ्यूडेशन, सब इन्फ्यूडेशन विल प्रमोट व्हाट, एब्सेंटी लैंडलॉर्डिज्म. दैट मीन्स व्हाट, नंबर ऑफ मिडलमैन विल इंक्रीज. दैट मीन्स व्हाट, अल्टीमेट बर्डन विल शिफ्ट ऑन द शोल्डर ऑफ द पीजेंट्स ओनली. तो ऐसे इफ यू विल ड्रॉ द स्ट्रक्चर लाइक दिस, थोड़ा और मतलब सर्कुलर आप बना लेना, साइक्लिक, ठीक है ना. सो दैट विल मेक योर आंसर डिफरेंट. एंड इफ पॉसिबल यूज स्केचेस एंड डायग्राम्स इन योर आंसर. ठीक है, ये तभी आएगा जब आप थोड़ा सा डिस्कशन बेस्ड अप्रोच पे पढ़ना सीखोगे. जब भी ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हो तो यू मस्ट रिक्वेस्ट योर टीचर्स ऑल्सो. ठीक है, देखो जहां से हम कुछ बेहतर सीख सकते हैं वहां अपनी बात रखने में कोई बुराई नहीं है. दैट मेक्स अस व्हाट, ओके, इनलाइटेड, कि how to use sketches and diagrams. For example, as a teacher, when I will do practice here, you are writing in your notes and ultimately you will be accustomed to this. ठीक है, you will start drawing the sketches on your notebook. ठीक है ना, मेरी बात समझ गया ना. तो you will have to incorporate it in your answers, करना है. और इससे भी बेहतर ढंग से आप बना सकते हो. मैं उतना अच्छा स्केच डायग्राम नहीं बना पाता हूँ, बट यू कैन डू मोर बेटर दैन मी. ठीक है ना. सो ऑलवेज मेक एफर्ट फॉर दिस. गॉट इट. और क्या हो सकता है, व्हाट कुड बी सम अदर पॉइंट्स, टेल मी. Yes. Obviously. Okay. So you can write like this. Write this. Okay. Man-made. Right. Man-made nature of famines and droughts. क्योंकि किसान ये समझने लगे थे कि अंग्रेजों की पॉलिसी की वजह से हो रहा है. Man-made nature of famines and droughts. ठीक है. इतने ज्यादा पॉइंट में क्यों लिखवा रहा हूं, ताकि आप सोच सोच के जवाब दे पाओ. एग्जाम में तो लिखना है आपको 5 to 6, बट इफ यू प्रैक्टिस राइटिंग 10 to 12 इन एग्जाम यू विल राइट 5 to 6. बट अगर आप 5 to 6 पे प्रैक्टिस करोगे तो एग्जाम में कितना याद आएगा, 2 to 3. ओके, तो आप सीधे थोड़ा प्रैक्टिस बढ़ा दो, तो दैट इज अ गुड थिंग. गॉट इट. और क्या हो सकता है, टेल सजेस्ट मी सम न्यू पॉइंट्स हियर. एक और बात देखो, पीजेंट्स विल लिव वेयर, इन विलेज एरिया और अर्बन एरियाज. कहाँ रहेंगे, विलेज एरियाज. And before British came to India or before colonial rule, the nature of villages were self-sufficient. And self-sufficient nature of villages means what? गांव वालों को अपनी जरूरत का हर चीज कहाँ मिल जा रहा है, विलेज से, right? They don't need to purchase anything from outside. They can get everything from their own. But what is happening in this colonial rule? The self-sufficient nature of villages is also disappearing. आज भी वही हो रहा है. Today also we see the same. Today in villages what you find? आज के गांव पहले जैसे गांव नहीं रह गए. The self-sufficient nature of villages is also disappearing. ठीक है, और हमें उसको बनाए रखने की जरूरत है. वो हमारी इकोनॉमी का सबसे मजबूत हिस्सा है. आज बड़ी कंपनियों ने गांव वालों को भी कंज्यूमर की तरह देखना शुरू कर दिया है और उनका फोकस धीरे धीरे मेट्रोपोलिस से
urban areas, smaller urban areas. Now they are focusing on the villages also. आज हिंदुस्तान के गांव ऐसे हैं जहां गांव वालों के पास अगर महीने में 10,000 रुपीज हो ना, तब भी वो आराम से अपना काम चलाते हैं और वो पैसा भी बच जाता है, बिकॉज दे ग्रो वेजिटेबल्स, दे ग्रो क्रॉप्स, मस्टर्ड है ना, वो उनके जरूरत का पूरा हो गया, हर चीज, मिल्क, देर आर कैटल्स फॉर द मिल्क, ठीक है। बट नाउ दैट नेचर इज डिसअपियरिंग, वो होना नहीं चाहिए, कभी नहीं होना चाहिए, ठीक है। वो हमारी स्ट्रेंथ तब भी थी और आज भी हमारी स्ट्रेंथ है, ये बात हमेशा समझना है। अगर गांव का आदमी भी 5 किलो वाला आशीर्वाद का आटा खरीदने लगे और कभी कोई क्राइसिस लाइक सिचुएशन आ जाए, तो फिर आप इमेजिन करो क्या होगा, वही होगा जो ब्रिटिश पीरियड में हुआ था। गॉट इट, मैन मेड फमेन्स। मेरी बात आप समझ पा रहे हो? शहरों में तो हमारी मजबूरी है, बट विलेजेस का सेल्फ सफिशिएंट होना बड़ा जरूरी है। सो राइट दिस पॉइंट ऑल्सो दैट सेल्फ सफिशिएंट नेचर ऑफ विलेजेस, सेल्फ सफिशिएंट nature of villages, self-sufficient nature of villages was disappearing, was disappearing. Self-sufficient nature of villages was disappearing. Got it? Lastly, can we say that agriculture production was declining, productivity was declining, savings of peasants were affected. Okay, now agriculture is not profitable. This is the essence of this entire debate. So, right, last point, that will be the essence, right? Okay, that agriculture production, comma, productivity was declining. Agriculture production, productivity was declining. Agriculture production and productivity was declining. Agriculture production, productivity was declining. Savings of the peasants were adversely affected. Savings of the peasants were adversely affected. Savings of the peasants were adversely affected. Productivity was declining. Savings of the peasants were adversely affected. Okay, right. और क्या था? Savings of the peasants were adversely. Agriculture now was less profitable, right? Agriculture now was less profitable. Agriculture was now less profitable. Agriculture now was less profitable. Now I am asking you one thing. If agriculture will be less profitable, so you will try to opt for a new occupation, profession. Agriculture छोड़ के कुछ और करना चाहोगे? क्या कर सकते हो आप एग्रीकल्चर छोड़ के? हैंडीक्राफ्ट, ट्रेड एंड कॉमर्स। हैंडीक्राफ्ट में क्या हो रहा था? डिक्लाइन इन हैंडीक्राफ्ट। ट्रेड एंड कॉमर्स में क्या हो रहा था इंडिया में? डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो आप बताओ कि क्या अदर ऑप्शंस और चॉइसेस आर दे अवेलेबल? यस और नो? नो, ठीक है। Exactly, this means what? Massive unemployment. So write this, other means of employment were also not available. Other means of employment were also not available. Were also not available. और वहां point indicate कर लेना, right in bracket, due to decline in handicraft and deindustrialization in India. Indicate this point. Okay, other forms of employment were also not available. Other forms of employment were also not available. Got it? Due to decline in handicraft and deindustrialization in India. Got it? So this all is what? इसी सब को हम क्या कहते हैं? This all is what? This all is called, okay, peasant revolt. This is the main factor of the peasant revolt. अच्छा बताओ, कहीं कहीं पे एक ये रीजन भी हो सकता है, एक्सप्लॉयटेशन बाय द लोकल जमींदार। यस और नो? यस, जो जमींदार अंग्रेजों के दोस्त होंगे, मजबूरी है उनको ऑन टाइम, तो कहीं एक मेंशन कर दो, एक्सप्लॉयटेशन बाय द लोकल जमींदार। दिस इज आल्सो वन फैक्टर, एक्सप्लॉयटेशन बाय द लोकल जमींदार, ठीक है, एक्सप्लॉयटेशन बाय द लोकल जमींदार। गॉट इट? सो दिस इज व्हाट पीजेंट रिवोल्ट। अब पीजेंट रिवोल्ट कोई भी हो, उसके फैक्टर्स क्या होंगे? कॉमन, यही हमें सीखना है। कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे, मेंस में, इफ दे आस्क द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर रिवोल्ट,
आपने इतना गेस कर लेना है कि ये क्या है, ये पीजेंट रिवोल्ट है कि ट्राइबल रिवोल्ट है। अगर वो पीजेंट रिवोल्ट है तो आपको क्या करना है, द पॉइंट्स विल बी कॉमन, वो कॉमन पॉइंट्स होंगे, ठीक है ना। नाउ लेट्स प्रैक्टिस भी कराऊंगा, आई विल ड्रॉ चार्ट, नेम भी लिखूंगा, पीजेंट्स, ट्राइबल्स, और सबके कॉमन आंसर क्या होंगे। लेट्स डिस्कस वन मोर टॉपिक हियर बिकॉज वी आर डिस्कसिंग कॉन्सेप्ट्स फर्स्ट, बाद में इसमें फैक्ट्स को हमें फिट कर देना है, राइट। द सेकेंड टॉपिक इज ट्राइबल्स। ट्राइबल्स, तो ट्राइबल रिवोल्ट्स भी थे, देयर वर ट्राइबल रिवोल्ट्स आल्सो, like peasants revolt there were tribal revolts also. Now the tribal revolt will be due to dissatisfaction of tribals. Tribal revolt का कारण क्या होगा, dissatisfaction of different tribal groups. Now what is the reason for the dissatisfaction of the tribals, this is important. अभी ये जवाब देना आपको, ठीक है। what is the reason for the dissatisfaction of the tribals? तो सबसे पहले देखो, सबसे ज्यादा इंडिपेंडेंट लाइफ किसकी थी, ट्राइबल्स की। एक बात हमेशा याद रखना, ट्राइबल्स ही ये बात कहते हैं, ट्राइबल्स से दिस, दैट बिफोर द ब्रिटिश केम टू इंडिया, बिफोर द ब्रिटिश केम टू इंडिया, अंग्रेजों के आने के पहले क्या था, मुगल रूल इन इंडिया, गॉट इट। सो ट्राइबल्स से दिस, दैट वाज द गोल्डन डेज फॉर अस, इट मींस कॉलोनियल रोल ने ट्राइबल्स का गोल्डन डेज उनसे क्या कर लिया, छीन लिया। इसका मतलब ट्राइबल्स के लिए अंग्रेजों से ज्यादा बेटर कौन से थे, हिंदुस्तान के दूसरे रूलर्स। एंड व्हाई दे आर सेइंग दिस, द वन रीजन इज British were the first group of outsiders in India who realized the importance of forest resource. Clear? And they calculated that how we can increase our colonial gains by using these forest resources. उन्होंने पहली बार फॉरेस्ट सर्वे कंडक्ट कराया, इसके पहले हिंदुस्तान में कभी भी कोई फॉरेस्ट सर्वे नहीं हुआ था, ठीक है ना। जैसे लैंड रेवेन्यू वाज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इनकम फॉर द ब्रिटिश, नाउ द कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन वाज थिंकिंग कि forest resources will also be one most important source of revenue for us. So what they will do, the British authorities, British officials will enter into the forest. पहले ध्यान से समझना है, फर्स्ट आई एम डिस्कसिंग द थीम, लास्टली वी विल राइट हियर 6 to 8 points, ठीक है ना। So British officials, CIC officials will do what? They will enter into the forest areas. And when outsiders will enter into forest area, what will happen? The independent lives of the tribals will be affected. Very simple. When outsiders will enter into the forest areas, the independent life of tribals will be affected. Who were these outsiders? ये outsiders कौन थे? These outsiders were Britishers plus their Indian agents. रास्ता कौन दिखाएगा उनको? इंडियंस, ठीक है। हम इंडियंस ने ही तो कॉलोनियल रूल बनाने में अंग्रेजों की मदद की। सो दीज आउटसाइडर्स वर ब्रिटिश प्लस देयर इंडियन एजेंट्स, एंड कॉलोनियंस विल, सॉरी, ट्राइबल्स विल कॉल देम डिकूज। डिकूज, ट्राइबल्स इनको क्या कहते थे, डिकूज। डिकूज मीन्स व्हाट, आउटसाइडर्स। एंड आउटसाइडर्स मीन्स व्हाट, आउटसाइडर्स मीन्स ब्रिटिश ऑफिशियल्स प्लस देयर इंडियन एजेंट्स, इंडियन एजेंट्स, दे आर द आउटसाइडर्स। तो ट्राइबल्स ने कहा कि डिकूज जंगल में एंटर कर गए, डिकूज एंटर इनटू द फॉरेस्ट। नाउ फॉरेस्ट इज लाइक देयर होम, ठीक है। फॉरेस्ट रिसोर्सेज को दे यूज टू वर्शिप, दिस इज द ट्राइबल कल्चर। एंड नाउ व्हेन ब्रिटिश विल एंटर, ब्रिटिश वर वेरी स्मार्ट, वी ऑल नो दैट colonialism itself is a very smart move, स्मार्ट सिस्टम। colonialism है ये स्मार्ट सिस्टम। colonialism का पहला जो सबसे बड़ा कह सकते हो कि इंपॉर्टेंट वेपन है वो क्या है, ठीक है, कि आपका गला भी काटेगा और ये बताएगा कि आपका गला काट के हम क्या कर रहे हैं, आप पे एहसान कर रहे हैं, ठीक है। ये बात वो एस्टैब्लिश कर देते हैं। नाउ व्हाट दे विल डू इन द केस ऑफ ट्राइबल्स, द स्टोरी इज वेरी इंटरेस्टिंग। द ब्रिटिश विल एंटर इनटू फॉरेस्ट एरियाज, नाउ दे विल सी ट्रीज, दे कैन बी इंपॉर्टेंट सोर्स। जैसे रेलवेज के डेवलपमेंट में वी कैन यूज व्हाट, वुड्स, वो कहाँ से आएगा, लॉग्स ऑफ वुड, वो कहाँ से आएगा, फॉरेस्ट से। प्लस एट दैट टाइम इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ राइफल्स, पुराने जमाने की राइफल आपने देखी होगी ना, ठीक है, म्यूजियम्स वगैरह में रखी होती है। उस राइफल में एक सबसे बड़ा कंपोनेंट होता था लकड़ी, वुड।
उसके हैंडल्स वगैरह सब देखोगे वुड वगैरह के बने होते थे ना। तो wood was not only used as a, you can say that it could be used in rifles, it could be used in arms and munitions, it could be used in development of railways. और रेलवेज का डेवलपमेंट तो इंडिया से बाहर भी हो रहा था ना, वहां भी भेजा जा सकता था। अगर आयरन एंड स्टील ब्रिटेन से आ सकता है इंडिया में, तो वुड यहाँ से वहां जा सकता है ना। तो वुड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। नाउ द ब्रिटिश ऑफिशियल्स विल एंटर इनटू द फॉरेस्ट, और फॉरेस्ट में ट्राइबल्स थे, एंड कटिंग ऑफ ट्रीज विल रिक्वायर व्हाट, ह्यूमन लेबर। ठीक है, आपको ट्रीज को कट करना है, कट करके लोड करना है, फिर उसको जंगल से बाहर ले जाना है। सो इट विल रिक्वायर व्हाट, ह्यूमन लेबर। एंड ब्रिटिश वर वेरी स्मार्ट, उन्होंने ट्राइबल्स की तरफ देखा, कहा भाई साहब इन लोगों ने तो सलमान खान जैसी बॉडी बना रखी है बिना जिम गए हुए, तो इनसे बेटर ह्यूमन लेबर क्या हो सकता है। मतलब जंगल किसका, ट्राइबल्स का। प्लान क्या है, ये जंगल कटवाना भी किससे है, ट्राइबल से ही कटवाना है। ठीक है, भिजवाना जंगल से बाहर किससे है, ट्राइबल से। इसके लिए वो क्या करेंगे, दे विल एंटर इनटू द फॉरेस्ट, दे विल मीट विद ट्राइबल यूथ। ठीक है, ट्राइबल यूथ से मिलेंगे, एंड दे विल ऑर्गेनाइज पार्टीज इन द फॉरेस्ट। पार्टी ऑर्गेनाइज कर लेंगे। ठीक है, पार्टी में ट्राइबल यूथ को इनवाइट करेंगे। ठीक है, और गांधी जिस काम के लिए मना करते थे वही काम करेंगे, एक पैग हो जाए, और एक पैग हो जाए, और फिर ट्राइबल यूथ को क्या करेंगे, द पार्टीज विल बी ऑर्गेनाइज कॉन्टिन्यूसली। आजकल प्राइवेट कंपनियां भी करती है। ठीक है, हर 15 दिन पे प्राइवेट पार्टी, प्राइवेट कंपनीज क्या करती है, पार्टी ऑर्गेनाइज करती है। ठीक है, राइट। तो देखो, अब ट्राइबल यूथ को क्या होगा, दे विल यूज लिकर, वाइन। ओके, आफ्टर सम टाइम the company officials will do what, okay, now the previously the camp was inside the forest, अब वो कैंप को कहाँ लगा देंगे, फॉरेस्ट के बाहर, और म्यूजिक वगैरह बजा देंगे जोर से। अब ट्राइबल यूथ सोचेगा यार इस वीकेंड पे पार्टी तो हुई नहीं, लेकिन म्यूजिक की आवाज बाहर से आ रही है, जंगल के बाहर से, तो चलते हैं जंगल के बाहर। अब तो पार्टी की आदत लग गई थी। नाउ ट्राइबल यूथ विल गो टू द पार्टी आउटसाइड द फॉरेस्ट। अब जंगल के सारे ट्राइबल यूथ पहुंचे पार्टी में फॉरेस्ट के बाहर, और कहा कि यार बुलाया नहीं तुमने हमें। अंग्रेजों ने कहा बार बार थोड़ी ना बुलाएंगे, इस बार पार्टी जंगल से बाहर हो रही है, तो कहा यार हमें भी थोड़ा पार्टी में शामिल होने दो, एक दो पैग हमें पिलाओ। उन्होंने कहा इसके लिए पैसा लगता है, ओके, यू नीड टू पे मनी फॉर दिस। ट्राइबल सेड व्हाट इज मनी, मनी क्या है, ये क्या है। दे सेड दैट मनी यू विल हैव टू अर्न। ट्राइबल्स विल से दैट हाउ वी कैन अर्न दिस मनी। British will say that we will offer you work, you will do work, and instead of that work we will pay you money, और उस पैसे का यूज आप चाहे जहां चाहो कर सकते हो। ठीक है, नेशनल मूवमेंट में लिकर शॉप्स को बंद कराना भी एक बहुत बड़ा प्रोग्राम था। इन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जब आप पढ़ते हो तो पिकेटिंग ऑफ लिकर शॉप्स वाज डन बाय वुमेन। ठीक है, बिकॉज दिस लिकर और वाइन वाज डूइंग व्हाट, ठीक है, कॉलोनियलिज्म का जो एक्सप्लॉयटेशन था, ये आपके दिमाग में आएगा ही नहीं। मेरी बात समझ गया ना, ये बहुत बड़ा कॉलोनियल एजेंडा था। नाउ दिस विल हैपन व्हाट, नाउ ट्राइबल यूथ केम आउटसाइड द फॉरेस्ट in search of money. Now British will offer them job inside the forest, and what is the job, cutting of the forest. अब देखो उनका काम क्या हो गया, आसान। ठीक है, जो आपको पैसा दे रहा है वापस वो ले भी ले रहा है, क्यों, क्योंकि वो लेकर भी आपको सेल कर दे रहा है, वाइन भी आपको सेल कर दे रहा है। इस तरह से क्या हो रहा है, the independent life of peasants is now disturbed, they need something from outside, अब उनको बाहर से कुछ चाहिए। दूसरा हमला कहाँ होगा, सेकेंड अटैक, वेयर द ब्रिटिश विल डू द सेकेंड अटैक, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखो, ब्रिटिश यूज टू कलेक्ट लैंड रेवेन्यू, लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करते थे। नाउ ट्राइबल्स had a practice of doing झूम cultivation. What is झूम cultivation, slash and burn, you all know this। ठीक है, कि वो अपना cultivation farm change करते रहते थे, this will happen, this was very scientific also। So the tribals were doing झूम cultivation। Now when the tribals will do झूम cultivation, is it possible for the British to collect, okay, revenues from those tribal peasants? No। ठीक है, क्योंकि वो स्टेबल एग्रीकल्चर नहीं है। कहीं एक जगह आप स्टेबल होकर एग्रीकल्चर करोगे, देन दे विल अप्लाई व्हाट, ओके, लैंड रेवेन्यू रेट्स, दे विल ब्रिंग दिस अंडर दिस, ओके, सिस्टम। नाउ ब्रिटिश अथॉरिटीज विल अनाउंस दैट झूम कल्टीवेशन इज प्रोहिबिटेड, शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज प्रोहिबिटेड।
एंड दिस वाज एज ओल्ड टेक्निक फॉर द ट्राइबल्स। कहा आप जूम कल्टीवेशन नहीं कर सकते, क्यों? नाउ यू विल हैव टू पे द लैंड रेवेन्यू, अब आपको लैंड रेवेन्यू देना है। ट्राइबल्स फिर परेशान हो गए, कहा ये क्या होता है यार, आज तक तो हमसे किसी ने लिया नहीं। बिफोर ब्रिटिश द डे वाज द गोल्डन एज, ओके, दे आर आस्किंग अस टू पे द लैंड रेवेन्यू, they are asking us not to do Zoom cultivation. It means they are doing what? They are interfering in our independent life. ठीक है, ट्राइबल यूथ आर कटिंग फॉरेस्ट फॉर द ब्रिटिश, बट व्हाट अबाउट द सीनियर ट्राइब मेंबर्स? वो देख रहे हैं, ठीक है, कि लड़के क्या हो गए हैं, बिगड़ गए हैं, ठीक है, इनको सुधारना पड़ेगा, राइट? और उनका गुस्सा किस पे है? ठीक है, अगर मैं आकाश को पार्टी पे बुलाऊं तो आकाश के पिताजी किस पे गुस्सा करेंगे? मुझ पे गुस्सा करेंगे। कैसा टीचर है यार, मिलता हूं मैं कभी टीचर से। सो दिस वाज हैपनिंग दैट द सीनियर मेंबर्स ऑफ द ट्राइब वेर नाउ रियलाइज्ड, दे रियलाइज्ड कि क्या हो रहा है, which kind of system has been promoted. Even British will start using minor forest produce of the forest. They will collect it and they will sell it. Minor forest produce तो आप जानते ही हो, ठीक है, अभी भी पॉलिटी वगैरह में आप इस चीज को पढ़ते हो। सो दिस ऑल वाज हैपनिंग। नाउ द ट्राइबल पीपल, उनको भी टैक्स के दायरे में आप लेके आए। और दूसरा क्या है, क्रिश्चियन मिशनरीज व्हेन दे केम टू इंडिया, वेयर दे एंटर्ड, बताओ? फॉरेस्ट। बिकॉज ट्राइबल कल्चर में उनको कन्विंस करके कन्वर्जन कराना बहुत आसान था, दैट वाज वेरी इजी। सो द क्रिश्चियन मिशनरीज आल्सो एंटर्ड इनटू द ट्राइबल एरियाज एंड देयर मेन पर्पस वाज व्हाट? Promoting conversion. So obviously this will be opposed by some of the members of the tribe. And one more thing, schools were opened, hospitals were opened. Now some of the tribal members, okay, you can say that some of the tribal youth will get education in the missionary schools. और जब उनको एजुकेशन मिल जाएगी तब तो वो समझ जाएंगे कि व्हाट इज कॉलोनियलिज्म। यही होता है। कुछ ट्राइबल यूथ जो एजुकेटेड थे, गॉट इट, उन्होंने क्रिश्चियन मिशनरीज में एजुकेशन पाई थी। एजुकेट होने के बाद उन्होंने क्या किया कि ट्राइबल कॉज के लिए लड़ाइयां लड़ी, या दे प्रोवाइडेड लीडरशिप फॉर द ट्राइबल कॉज। सो दिस ऑल हैपेंड, गॉट इट, ओके। Forced land acquisition, yes, this is also one important point, okay, acquisition, restriction, okay. So all these are the reasons that tribals were dissatisfied, and then tribal dissatisfaction will be in the form of what? Tribal revolt and rebellions, okay. So write the points, 5 or 6 points you must know. Write point one, right? Okay, right. Self-sufficient nature of tribal economy was lost. Self-sufficient nature of tribal economy was lost. Self-sufficient nature of tribal economy was lost, right? Right. Company company interfered company interfered in the independent life of tribal people. Company interfered in the independent life of the tribal people and put several restrictions on tribals and put several restrictions on tribal people. Company interfered in the independent life of tribal people and will put several restrictions on tribal people, right? They will interfere into the independent life of tribals and they will also put several restrictions on the tribal people. Tribal people पर restrictions भी लाए. Got it? Right, third point. Okay, third point, read this. Okay, right. British were the first group of outsiders. British were the first group of outsiders who conducted forest surveys in India. Who conducted forest surveys in India. British were the first group of outsiders who conducted forest surveys in India. Okay, and the main purpose behind this was exploitation of forest resources. And the main purpose behind this was exploitation of
forest resources, and the main purpose behind this was exploitation of forest resources. Main purpose behind this was exploitation of forest resources. एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं आपको, when I started putting my videos on YouTube, ठीक है, तो इनिशियली many suggestions came कि इतनी लंबी वीडियोस कोई नहीं देखता है, and I am very happy to share with you that my YouTube videos have been crossed 10,000 watch hours. ठीक है, 10,000 का माइलस्टोन क्रॉस किया, और अभी हमारे सब्सक्राइबर 200 के आसपास हैं, और एक वीडियो है उसमें, उस पर लगभग 10,000 11,000 व्यूज जो है ना वो क्रॉस किया है। ठीक है, और वो लंबी वीडियो है, दैट इज 3 आवर्स लॉन्ग। तो ये बात मैं बहुत पहले से, मेरे अंदर से ये आवाज आती थी हमेशा कि स्टूडेंट्स वांट ऑन यूट्यूब आल्सो, दे वांट सम क्वालिटी कंटेंट, कि कहीं पे वो कोई वीडियो देख रहे हैं तो पूरा टॉपिक उन्हें समझ में आ जाए। बट फिल्म के ट्रेलर की तरह लोग आते हैं, ज्ञान देते हैं और चले जाते हैं। ठीक है, अगर उनको पूरी फिल्म दिखाई जाए तो वो देखना पसंद करेंगे। मुझे पहले से ऐसा इंट्यूशन था, एंड आई वाज राइट। ठीक है, कि पुटिंग लॉन्ग वीडियोस ऑन इंटरनेट ओके विल बी अ गुड एक्सपेरिमेंट, तो वो ठीक जा रहा है। ठीक है ना, चलिए। सो दिस इज व्हाट एक्सप्लॉइटेशन ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज लिखा आपने, राइट। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, ओके। Restriction on zoom cultivation, restriction on zoom cultivation or shifting cultivation, restriction on zoom cultivation or shifting cultivation। ठीक है, restriction on zoom cultivation and shifting cultivation। ठीक है, restriction on zoom cultivation and shifting cultivation, right। next point, okay। zoom cultivation shifting cultivation पे restriction और क्या हो सकता है? ठीक है, right। next point, okay। agricultural lands in forests, agricultural lands in forests, agricultural lands in forests were brought under under land revenue system, land revenue system। It means now tribals also had to pay the land revenue, land revenue इनको भी देना था, the tribals also had to pay the land revenue, got it। अच्छा, जैसे ही आप लैंड रेवेन्यू सिस्टम लेके आओगे तो लैंड रेवेन्यू सिस्टम से जुड़ी हुई सारी बुराइयां आ जाएंगी कि नहीं। जैसे मान लो हाई रेट ऑफ लैंड रेवेन्यू, गॉट इट। लैंड रेवेन्यू में कोई रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा, द रोल ऑफ मनी लेंडर्स ऑल विल कम हियर। ठीक है, तो यू कैन राइट हियर, केवल इंडिकेशन लिख लो, हाई रेट ऑफ लैंड रेवेन्यूज, हाई रेट ऑफ लैंड रेवेन्यूज, गॉट इट, हाई रेट ऑफ लैंड रेवेन्यूज। सेकेंड पॉइंट, रोल ऑफ मनी लेंडर्स, role of money lenders, okay। No relaxations, no relaxations in land revenues, no relaxations in land revenues, no relaxations in land revenues, got it, right। next point, cultural subjugation, ये भी एक बड़ा important issue है, cultural subjugation of the tribals, cultural subjugation of tribals। And what is this cultural subjugation of the tribals? You can write a few points here. For example, one is, right, role of Christian missionaries, cultural subjugation, because Christian missionaries will do what? Promote conversion. So, right, cultural subjugation, role of Christian missionaries, role of Christian missionaries. In cultural subjugation, we see what? Role of Christian missionaries. ठीक है? Number 2, role of Christian missionaries. Corrupting, right, promoting addiction of liquor or wine among the tribal youth. This was also a part of agenda, promoting addiction of liquor or wine among the tribal youth, okay, tribal youth। और ऐसा करके क्या किया जा रहा था? बेगार करवाया जा रहा था कि नहीं ट्राइबल से। ठीक है, एक पैक ड्रिंक उनको दे दो और दिन भर उनसे काम करवाओ, ये क्या हो गया? बेगार। आजकल भी गांव में कुछ स्मार्ट लोग हैं, ये काम कर लेते हैं, दे आर वेरी स्मार्ट इन डूइंग दिस, बेगार, ओके। तो जो आपने लिखा है प्रोमोटिंग लिकर अमंग द ट्राइबल यूथ, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, बाय प्रोमोटिंग बेगार एज अ रिजल्ट ऑफ दिस। इससे क्या हो रहा है? बेगार, इट मीन्स ट्राइबल विल वर्क फॉर यू एंड यू आर नॉट पेइंग देम सैलरी फॉर दैट, बेगार। अच्छा, उसके बाद क्या कर रहे हो? यू आर कटिंग फॉरेस्ट, फॉरेस्ट भी आप कट कर रहे हो, ओके, जो ट्राइबल्स का ही एक तरह से कह सकते हो कि
होम है, ट्राइबल की प्रॉपर्टी है। ओके, क्रिश्चियन मिशनरीज का रोल लिख लिया आपने, प्रोमोटिंग कन्वर्जन। ओके, promoting westernization, promoting westernization, this will also be one factor, promoting westernization. Okay, right. Minor forest products or produce were also taxed by the colonial authority. Minor forest produce of the tribal people were also taxed. Minor forest produce of colonial people were also taxed. Minor forest produce को भी क्या कर दिया, taxed कर दिया. All these are the results of, all these are the factors for the tribal revolt. तो जहां पे भी कोई tribal revolt आएगा, विपिन, what you have to do, all these common points you have to write. Okay, so after all the concepts I will just discuss so many questions with you कि while writing answer you have to use common points. सभी क्वेश्चन के अलग अलग आंसर नहीं तैयार करने, फिर तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा. मेरी बात समझ गया ना? मुश्किल इसलिए हो जाएगा क्योंकि वो एकेडमिक एग्जाम नहीं है. आपका परफॉर्मेंस कैसा है ये भी तो देखो. इन 7.5 minutes यू आर राइटिंग आंसर ऑफ वन क्वेश्चन, और उसमें इतने सारे सब्जेक्ट्स एक साथ जुड़े हुए हैं, 3 hours प्लस 3 hours. तो उन सब चीज़ों को ध्यान में रख के अपनी स्ट्रेटजी आपको तैयार करनी है. यू डोंट हैव टू प्रिपेयर वेरी स्पेसिफिक आंसर. ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखना. बहुत स्पेसिफिक नहीं कर रहा है, नहीं तो वो कभी तैयार नहीं हो पाता, बिकॉज आवर माइंड हैज सर्टेन लिमिटेशंस. मैं इतने साल से हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ. मेनी अ टाइम्स आई यूज टू फॉरगेट द फैक्ट्स एंड इन्फॉर्मेशन. मैं खुद ही भूल जाता हूँ. तो मैं कैसे एक्सपेक्ट करूँ कि आप इतने सारे सब्जेक्ट्स पढ़ते हुए सारे के सारे इन्फॉर्मेशन हमेशा याद रख पाओगे. दिस इज नॉट प्रैक्टिकल, एंड वी हैव टू थिंक इन अ प्रैक्टिकल मैनर कि कितना हम मेमोराइज कर सकते हैं रिपीटेडली जिसको हम पढ़ सकते हैं. सो वी शुड फोकस ऑन दैट ओनली. ठीक है ना, ये हमेशा याद रखना है. राइट, चलिए नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं. नेक्स्ट टॉपिक, अब बताओ द थर्ड क्लास विच वाज डिससेटिस्फाइड. और कौन डिससेटिस्फाइड था? ओके, विमेन. हाँ, विमेन तो डिससेटिस्फाइड थी. एक तो पेट्रियार्की था, दूसरा कॉलोनियल रूल था. और कोई दूसरा पॉइंट बताओ, विमेन वाला बाद में लिखेंगे, है ना? और क्या है? प्रिंसली स्टेट्स वाला पॉइंट बहुत अच्छा. रेड दस प्रिंसली स्टेट्स, दे वर आल्सो डिससेटिस्फाइड. प्रिंसली स्टेट्स, इसको तो हमने बहुत डिटेल में पढ़ा था ना. प्रिंसली स्टेट्स, दे वर आल्सो डिससेटिस्फाइड. प्रिंसली स्टेट्स वर आल्सो डिससेटिस्फाइड. प्रिंसली स्टेट्स वर आल्सो डिससेटिस्फाइड. ओके, अब देखो क्या है, एक वर्ड आता है प्रिंसली स्टेट्स से. आकाश, प्रिंसली स्टेट से देखो, देयर इज अ वर्ड सिविल रिबेलियन विच यू विल फाइंड ऑफन इन द बुक्स. तो लेट्स डिस्कस द मीनिंग ऑफ दिस सिविल रिबेलियन. सिविल रिबेलियन का मतलब क्या होता है पहले समझ लेते हैं, देन आई विल डिस्कस द प्रिंसली स्टेट्स इशू. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिविल रिबेलियन? Civil rebellion simply means what? Okay, for example, there were local rulers which were calling what? Princely states, and their state was forcefully annexed by whom? It was forcefully annexed by British. So now these are the local rulers who has lost their state, and they are called displaced rulers. They are called what? Displaced rulers. इनको क्या कहा जा रहा है? Displaced rulers. The rulers, the princely states who have lost their state as a result of some British policy, they are displaced rulers. Can we say, okay, that doctrine of lapse was introduced? ठीक है. And by this doctrine of lapse, Satara, Jaipur, Sambalpur, ठीक है, Udaipur, Baghat, Jhansi, Awadh, all these states, okay, their rulers lapsed their right to rule. इन्होंने अपना रूल करने का अधिकार क्या किया? खो दिया. Awadh was also forcefully annexed. Now this class of ruler is will be called what? Displaced rulers. अब ये रूलर नहीं रहे. They have lost their state. Now, if I am the ruler, and now if I am not the ruler, so what will happen? The nobility class, मेरे ministers जो कोर्ट में मेरे साथ बैठा करते थे, वो पोइट्स जो मुझे कविताएं सुनाया करते थे, what will happen? All this nobility class will also get displaced. उनकी भी नौकरी चली जाएगी. रूलर के जाते जाते क्या होगा? नोबिलिटी क्लास, कमांडर इन चीफ, मंत्री, महामंत्री, ओके, ऑल देयर. उसके बाद क्या होगा? इफ आई एम द रूलर एंड आई हैव लॉस्ट माय स्टेट, सो व्हाट अबाउट माय डिसेंडेंट्स? ठीक है,
राजकुमारों का क्या होगा? वो तो इसी इंतजार में बैठे रहते कि राजा साहब ऊपर जाए तो हम राजा बने। ठीक है, तो क्या होगा? दे विल ऑल्सो लॉस देयर स्टेट। ओके, सो वन क्लास ऑफ नोबिलिटी इज रिप्लेस्ड बाई अनदर क्लास ऑफ नोबिलिटी. The nobility of the local ruler is replaced by the nobility of East India Company. So who will lose the privileges? Displaced rulers के अलावा, write this. Nobility class, write this. Nobility class in that particular state, or you can say that royal supporters. Royal supporters means supporters of the ruler. Okay, they will also lose their privilege. They will also lose their privilege. They will also lose their privilege. Got it? They will also lose their privilege. Very simple. Okay. रूलर का मिनिस्टर हो सकता है, मिनिस्टर एक झटके में बेरोजगार हो जाएगा, कमांडर इन चीफ एक झटके में बेरोजगार हो जाएगा. सो देखो, द रिवोल्ट्स दैट वेयर स्टार्टेड बाय डिस्प्लेस्ड रूलर्स, द नोबिलिटी क्लास ऑफ दिस डिस्प्लेस्ड रूलर, ध्यान से समझना, द महामंत्री ऑफ द रूलर और द नोबिलिटी क्लास ऑफ दैट रूलर, दे विल प्रोवाइड लीडरशिप. और उसमें सपोर्ट कौन करेगा उसको? बताओ. जैसे मान लो एक स्टेट है अवध, और अवध को फोर्सफुली एनेक्स कर लिया गया, तो अवध का रूलर जब रिवोल्ट करेगा तो उस रूलर को सपोर्ट कौन करेगा? द नोबिलिटी क्लास. अवध में क्या हुआ? द आर्मी वॉज डिसबैंडेड, उसकी आर्मी को आपने डिसबैंड कर दिया, तो उस रूलर को सपोर्ट कौन करेगा? मेंबर्स ऑफ दैट डिसबैंडेड आर्मी. हो सकता है कि अवध के पीजेंट्स भी आ जाएं सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि वो पहले से ही परेशान है. हो सकता है कि आर्टिजन क्लास भी आ जाए सपोर्ट करने के लिए, वो पहले से परेशान है. गॉट इट? मेरी बात समझ गया ना? तो दिस काइंड ऑफ रिवोल्ट इज कॉल्ड सिविल रिबेलियन. हमेशा ये बात ध्यान रखना कि व्हाट इज सिविल रिबेलियन. इफ समवन आस्क यू व्हाट इज सिविल रिबेलियन, तो कैसे डिफाइन करना है? यू विल से दैट सिविल रिबेलियंस आर दोज रिबेलियंस which were started by class of displaced rulers or the descendants of these displaced rulers or the nobility class of the displaced ruler, and it was later supported by different classes like the class of peasant, like the class of artisans, etc. This kind of rebellion is called what? Okay, civil rebellion. नोट कर लेना इस पॉइंट को, बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, व्हाट इज सिविल रिबेलियन? ओके, द रिबेलियन that is started by the displaced ruler or nobility class like mantri, like minister of the ruler, nobility class. Okay, and it is further supported by, and it is further supported by, and it is further supported by, it is further supported by the other groups in the state like the peasants, artisans, etc. And it is further supported by other groups in the state like the peasants, like the artisans, etc. Got it? This kind of rebellion is called civil rebellion. मेरी बात समझ गया ना? तो princely states, those princely state rulers, okay, who have lost their rule, obviously they will also express their dissatisfaction by providing leadership. By providing leadership. For example, देखो, revolt of 1857 में who participated? Rani Jhansi, Nana Sahib. Why they participated? Because they were not happy with the colonial rule. कितना आसान है. तो और princely state dissatisfied क्यों थे? We all know that by the policies of the British. जैसे ब्रिटिश पहले लेके आया क्या? Policy of subsidiary alliance. Subsidiary alliance क्या किया? It was also forcefully applied. Name है policy of subsidiary alliance. This is basically an alliance of friendship and cooperation. और किसी से जबरदस्ती फ्रेंडशिप की जाती है क्या? बताओ. सर पे गन लगा के फ्रेंडशिप की जाती है क्या? विल यू लाइक टू बी माई फ्रेंड? नहीं. अंग्रेजों का अप्रोच यही था. ठीक है, दे विल पुट गन एंड दे विल से दिस इज फ्रेंडशिप डे, विल यू लाइक टू बी माई फ्रेंड? ठीक है, ये हाल था इनका. ओके, तो पहले तो सब्सिडियरी अलायंस लेके आए, देन व्हाट वी सी, और कौन कौन से है? पॉलिसी ऑफ सबऑर्डिनेट आइसोलेशन, सब आपको पता है. सबऑर्डिनेट आइसोलेशन से क्या किया? दो या दो से ज्यादा लोकल रूलर्स को कभी भी एलाइज नहीं बनने दिया. गॉट इट?
I have already discussed with you in detail. Okay, then one topic is doctrine of lapse. ये भी तो है, policy of doctrine of lapse. There are many such policies I have already discussed with you. पहले ही discuss कर चुका हूँ, तो I am not entering into more details. I hope you all know this. बहुत डिटेल में इस टॉपिक को किया था, याद है ना? सारे टॉपिक पता है. In details we have done it. अच्छा, एक और बात देखो, जो प्रिंसली स्टेट रूलर्स थे, they were the local rulers, so they will patronize scholars. Obviously they will patronize scholars. ये एंशियंट इंडिया से ट्रेडिशन रहा है. जितने मैथमेटिशियन हैं, एस्ट्रोनॉमिकल स्कॉलर्स हैं, राइट, प्ले राइट्स हैं, poets हैं, or they all were patronized by the local rulers. And in this way in India art and culture also promoted. Local rulers को encourage कौन करता था? सॉरी, आर्टिस्ट को या स्कॉलर्स को encourage कौन करता था? प्रिंसली स्टेट. ठीक है, या फिर जो प्रीस्ट है, जैसे राजा, मंत्री और उसके बाद एक राज पुरोहित की तो ऑफिस हमेशा बनी रहती थी. ठीक है, तो अगर हिंदू रूलर है तो राज पुरोहित होगा, मुस्लिम रूलर है तो प्रिंसली प्रिंसली स्टेट. इफ इट्स अ मुस्लिम रूलर सो दैट विल बी अ मुस्लिम रिलीजियस पर्सन. उलेमा हो सकता है, मौलवी हो सकता है. सो दे ऑल वेर पैटर्नाइज्ड बाय द लोकल रूलर्स. अब अंग्रेज आएंगे तो किसको पैटर्नाइज करेंगे? पंडित जी को कि मौलाना साहब को या फादर को? किसको पैटर्नाइज करेंगे? ऑब्वियसली उनको हिंदी में पोएम सुनना है क्या, कि कालिदास की कहानी सुना होगा? नहीं, उनको कीट्स के बारे में जानना है, शेली के बारे में जानना है, वर्ड्सवर्थ के बारे में जानना है. मतलब एक बात बता रहा हूँ, नॉर्मल कॉन्सेप्ट आप सुनते. इट मीन्स दीज क्लास ऑफ स्कॉलर्स, they will also lost their patronage because local rulers used to give them patronage. Okay, so they will also be dissatisfied. वो भी dissatisfied होंगे. For example, you will find the name Sannyasi rebellion, Fakir rebellion. Okay, the British will do what? British will impose pilgrimage tax also. इससे भी लोग नाराज हो जाएंगे. British when they will promote westernization, will they will promote Christianity, इससे भी ये लोग नाराज हो जाएंगे. Plus they have already lost their patronage and support. So this class was also angry with the colonial rule, and we see an expression of this class also. That is what? Okay, Sannyasi Fakir rebellion, priestly class. So write this point that okay, dissatisfaction of scholars and priestly class, dissatisfaction of scholars and priestly class in the form of revolt and rebellion. In the form of revolt and rebellion. Scholars and priestly class in the form of revolt and rebellion. Okay, यहाँ पे दो तीन points note कर लेना why they are dissatisfied. Okay, right, point one. Okay, they lost their patronage. They lost their patronage. They lost their patronage. That is the most important thing. Okay, patronage of local rulers and the Indian nobility class. They lost their patronage of local rulers and Indian nobility class. They lost their patronage of local rulers and Indian nobility class. Got it? They lost their patronage. Clear? दूसरा point क्या हो जाएगा? Why they are not happy? Read this. Imposition of pilgrimage taxes. Imposition of pilgrimage taxes. Imposition of pilgrimage taxes. Imposition of pilgrimage taxes. Third point क्या होगा? Right. Attempts to promote westernization and Christianity. They're also unhappy as a result of this. Attempts to promote westernization and Christianity. Attempts to promote westernization and Christianity. They are also unhappy. ये भी unhappy. Now, the another group which is not happy with the colonial rule is what? Artisans. Right. Artisans. Artisans. This is also not happy with the colonial rule. Who are artisans? Artisans कौन है? बताओ. I've already discussed with you. Those people who are engaged in handicraft business. Clear? There are different kind of handicrafts like wood craft, gold craft, metal craft, bamboo craft, paper craft, textile craft. And when British came to India, what happened? Decline in handicraft. मेरी बात समझ गया ना? So we can say that before British,
Okay, before British presence in India, okay, Indian handicrafts were very rich. Indian handicrafts were very rich. Before British presence in India, Indian handicrafts were very rich. Before British came to India, before British presence in India, it was very rich. Plus, it was very diversified. It was very diversified. बहुत rich था. It was very diversified. Okay. Local demands were very high. Local demand of this handicraft, local demands of these handicrafts were very high. Local demand of these handicrafts were very high. Local demand of these handicrafts were very high. Got it? अच्छा, सप्लाई कब बढ़ेगा, मैन्युफैक्चरिंग कब बढ़ेगा, जब डिमांड हाई होगी. सो लोकल डिमांड वेर वेरी हाई. एंड वन मोर थिंग, राइट दिस, इंडियन, राइट दिस, इंडियन रूलर्स क्लास, local rulers, Indian rulers class or the local rulers, and Indian nobility class, Indian nobility class were the most important buyers of Indian rulers class or the nobility class were the most important buyers of handicraft goods in India. They were the most important buyers of handicraft goods in India. कितना आसान कि they were the most important buyers of handicraft goods in India. ठीक है. फिल्मों में देखा ना आपने, राजा साहब को अगर कुछ पसंद आ गया तो वो कहेंगे ये लो मेरा मतलब नेकलेस ले लो, घड़ी ले लो, सब डोनेट कर देते थे. They were paying the most, you can say that, and this encouraged the artisans. इससे artisans को क्या मिलता था, encouragement. ठीक है, कि भाई आज राजा ने 100 मुहरे दान कर दी किसी आर्टिस्ट को. क्या किया था उसने, तो एक पोएम सुनाया था. बस लोग बैठ के पोएम लिखने लगेंगे कि काश मेरी पोएम भी राजा के पास पहुंच जाए. दिस जस्ट अ जोक, बट व्हाट डज इट मीन, इट मीन्स दैट व्हेन यू विल गिव the price that is more than the price of the product, you are doing what, you are encouraging that craft. आप उस क्राफ्ट को क्या कर रहे हो, प्रमोट कर रहे हो, राइट. दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट. ओके, तो ये हो रहा था इंडिया में. प्लस इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स वेर ऑल्सो हाई इन डिमांड इन द यूरोपियन मार्केट. ये भी था. इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स, राइट दिस, द एक्सपोर्ट ऑफ Indian handicrafts was also very high. These were very high in demand in the markets of Europe. Europe में भी इनका डिमांड था. They were very high in demand in markets of Europe. European markets में बहुत हाई डिमांड था. अच्छा, एक बात मैं आपसे पूछता हूँ, वो क्या है कि क्या हैंडीक्राफ्ट केवल एक प्रोडक्ट है कि ये कल्चर को भी दिखलाता है, ये कल्चर को भी रिप्रेजेंट करता है. मेरी बात समझ गया ना. If you will purchase something from Pipli, it reflects the culture of Pipli, Pipli art. If you purchase something from Jaipur, Rajasthan, तो वहां से क्या होगा, राजस्थान का कल्चर रिफ्लेक्ट. If you will purchase something from Kerala, so that product will reflect the culture of Kerala. If you will purchase something from Northeast, okay, bamboo craft और कुछ भी, so that is representing the culture of that particular area. एंड ब्रिटिश वर वेरी स्मार्ट. उनको क्या इंडियन कल्चर को प्रमोट करना था, नहीं. ओके, तो देखो इसमें पूरा का पूरा चेंज आएगा और मोस्ट प्रोबेबली दिस कैन बी अ यूपीएससी क्वेश्चन. ठीक है, आने वाले टाइम में नेक्स्ट ईयर या उसके बाद ये क्वेश्चन हो सकता है. ध्यान रखना, करंट अफेयर से जोड़ना है इसको कि अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैंडीक्राफ्ट को प्रमोट करने के लिए कौन कौन से एफर्ट्स कर रही है. तो व्हेन द क्वेश्चन विल बी आस्क्ड, दे विल आस्क स्टैटिक प्लस डायनेमिक. ठीक है ना, गॉट इट. तो ध्यान रखना इस बात को कि और एक क्वेश्चन और आप तैयार करना करंट अफेयर टॉपिक में कि हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री के सामने अभी करंट चैलेंजेस क्या हैं, इन चैलेंजेस को सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है और भी क्या किया जाना चाहिए. ठीक है ना. एक वीडियो मैंने रिकॉर्ड किया था, उसका मैं लिंक शेयर कर दूंगा. ठीक है, हिंदी में मैंने बनाया था उसको, तो उसको सुनना. उस पे इस टॉपिक पे बहुत डिटेल रिसर्च करके मैंने बनाया है, तो वॉच दैट टॉपिक. ओके, आई विल शेयर द लिंक विथ यू टुडे. और उसमें मैंने इस पे पूरी बात बताई है कि व्हाट आर द चैलेंजेस दैट हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री इज फेसिंग टुडे. पीपली आर्ट से रिलेटेड वीडियो है, बट दैट माइट बी हेल्पफुल फॉर यू. ठीक है ना, आई विल शेयर द लिंक विथ यू. हाँ, आई विल शेयर द वीडियो.
वीडियो में बताऊंगा इन डिटेल, आई हैव ऑलरेडी रिकॉर्डेड इट, ठीक है ना, तो उसको देखिएगा आप, दैट विल बी हेल्पफुल फॉर यू, गॉट इट। नाउ दिस इज व्हाट, हैव यू अंडरस्टूड दिस एंटायर थिंग? Okay, you can write one more point that, okay, handicraft industry in India, write this, handicraft in industry in India was very rich and diverse, and at the same time handicraft industry in India was very rich and diverse, and at the same time it was also reflecting, and at the same time it was also reflecting the cultural traditions of India, and at the same time it was also reflecting the cultural traditions of India. Handicraft industry was very rich, it was very diverse, and at the same time it was also reflecting cultural traditions of India. मेरी बात समझ गए? अब हमें क्या करना है? कंपेयर करना है। क्या कंपेयर करना है? What will be the effect of British rule on this industry? देखो ये क्या किया हमने, ट्रेडिशनल पार्ट समझा, राइट दिस, इफेक्ट्स ऑफ ब्रिटिश रूल, इफेक्ट्स ऑफ ब्रिटिश रूल, British rule on handicraft industry. Effects of British rule on handicraft industry. Effects of British rule on handicraft industry. क्या इफेक्ट है ब्रिटिश रूल का? इफेक्ट्स ऑफ ब्रिटिश रूल ऑन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री. This we need to understand. What is the effect of British rule on handicraft industry? Read this, decline in handicraft. Decline in handicraft. Decline in handicraft. Now you have to explore the reasons that why decline in handicraft, क्यों हुआ ऐसा, ठीक है? Now suggest me some points, क्यों हुआ ऐसा? पहले इसको लिख लो, write this, unfair tariff mechanism, unfair tariff mechanism, unfair tariff mechanism. Indian handicraft goods पे the British will do what? They will impose high export duties, ठीक है ना? तो जब ये गुड इंडिया के बाहर जाएगा तो ऑटोमेटिकली महंगा हो जाएगा, या ब्रिटेन में जब ये जा रहा है तो वहां दे विल इंपोज हाई इंपोर्ट ड्यूटी, इससे वो गुड्स क्या हो जाएंगे, महंगे हो जाएंगे. ओके, सो यू कैन राइट दिस, अनफेयर टैरिफ मैकेनिज्म. दिस इज वन रीजन. सेकेंड रीजन क्या हो सकता है? टेल मी, सजेस्ट मी द पॉइंट. क्या ऐसे लिखने की बजाय, है ना, गवर्नमेंट कॉलोनियलिज्म में डायरेक्ट ऐसे नहीं करेगी, यू कैन राइट दैट, ओके, नो ऑफिशियल सपोर्ट एंड हेल्प, ठीक है, फॉर द प्रमोशन ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स इन इंडिया, क्योंकि गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है. आज देखो गवर्नमेंट हैंडीक्राफ्ट्स को प्रमोट करने के लिए कितनी प्रोएक्टिव मेजर्स लेती है, ठीक है ना. सो राइट दिस, नो ऑफिशियल सपोर्ट और हेल्प, नो ऑफिशियल सपोर्ट और हेल्प फॉर द promotion of, no official support or help for the promotion of handicrafts in India, for the promotion of handicrafts in India, no official support or help for the promotion of handicraft in India. और क्या हो सकता है? Any other point? Reduced prices मतलब नहीं नहीं, हाँ तो ठीक है, ये टैरिफ मैकेनिज्म में आ जाएगा. एनी अदर पॉइंट? देखो what happened, the Indian nobility class was replaced by the British nobility class, and I have already told you that Indian nobility class, the local rulers and the nobility class were the important buyers. तो देखो इंडियन बायर जो सबसे अच्छा बायर था, वो उसकी जगह कौन आ गया? ब्रिटिश नोबिलिटी क्लास. तो इससे क्या होगा? डिमांड विल डिक्लाइन. सो राइट दिस, थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, राइट, इंडियन नोबिलिटी क्लास was replaced by British nobility class. Indian nobility class were replaced by British nobility class. Very good. Loss of patronization. ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है. इंडियन नोबिलिटी क्लास was replaced by British nobility class. अब ये जो पॉइंट है इंडियन नोबिलिटी क्लास, यही पे एरो मार्क दे के लिख लो, loss of patronage, loss of patronage, loss of patronage, help and support, loss of patronage, because these people were the most important buyers ना. ये क्या थे? They were the most important buyers. तो loss of patronage is one reason, ठीक है, loss of patronage is one reason. They were the most of important buyers, ठीक है. और क्या हो सकता है? Yes, role of Christianity
तो क्या होगा, प्रोमोशन ऑफ वेस्टर्नाइजेशन, ठीक है, राइट दिस, ओके, दिस इज ऑल्सो वन रीजन, राइट दिस, promotion of westernization, promotion of westernization in India, promotion of westernization in India. And here we can relate 2 points. One is what, role of Christian missionaries, clear, because they are promoting what, conversion, they are promoting what, conversion, role of Christian missionaries, they are promoting what, conversion. And the second point क्या हो सकता है, okay, that is, write this, promotion of English system of education in India, promotion of English system of education in India, anglicization, very good point, anglicization, anglicization of, okay, anglicization. Bu- हाँ, तो that is the reflection of the same point. You can write further if you want to write here that this will do what, write this, the main purpose was to change the main purpose was to change the, okay, consumer needs of Indian people, okay, the main purpose was to change the consumer needs of Indian people, यही main purpose था, the main purpose was to change the consumer needs of Indian people, ठीक है, कंज्यूमर नीड्स को चेंज कर देंगे तो क्या होगा, ओके, कंज्यूमर डिमांड्स विल चेंज एंड अल्टीमेटली, exactly, right, consumer needs will change, consumer demands will change. Now tell me one thing, the impact of all this is what, the impact of all this is what, decline in handicraft. जैसे एक छोटा सा एग्जांपल बता रहा हूं, छोटा सा एग्जांपल क्या है कि पहले के राजा महाराजा जो कपड़े पहनते थे वो हैंड स्टिच्ड होते थे, छोटा सा एग्जांपल जिसको आप बहुत बेटर ढंग से रिलेट कर पाओगे, लोकल आर्टिजन्स उनके ड्रेस को तैयार करते थे, हैंड स्टिच्ड होते थे, उसमें जरी कारीगरी का काम होता था, बहुत सारे रत्न आभूषण ये सब लगे होते थे, राइट, दैट वाज हाईली डेकोरेटेड. नाउ व्हेन ब्रिटिश विल केम, तो वहां से क्या लेके आएंगे, राजा बाबू वाला ड्रेस, सूट बूट, चश्मा, गोल वाला हैट, ठीक है, उसके बाद राजा बाबू अलग ही मूड में है, ठीक है, तो इससे क्या हुआ, कहीं ना कहीं वो, अभी बताओ, अभी आपको वो पुराने राजा वाला ड्रेस दे दिया जाए तो पहन के जाओगे क्या, कहीं घर से बाहर नहीं निकलोगे, ठीक है, और अगर निकल भी गए तो कुत्ते भौंकने लगेंगे, ठीक है, कि ये कहाँ से आ गया, कोई जोकर वोकर है क्या, तो वेस्टर्नाइजेशन का इतना ज्यादा इम्पैक्ट हो गया, ठीक है, तो यही हो रहा था वहां, ठीक है, राजाओं की भी नीड्स भी बदल रही थी, ठीक है, दिस इज व्हाट, एंग्लिसाइजेशन. अब आप बताओ कि डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इन इंडिया, was it a colonial conspiracy or not, yes or not, was it a colonial conspiracy, yes, it's not natural, ये natural नहीं, this was a colonial conspiracy, ठीक है, and by doing this what British will do, they will be able to sell more foreign goods in India, ज्यादा से ज्यादा अपना गुड्स बेच पाएंगे, ओके, दिस विल हैपन. एक और बात समझो, छोटी सी बात है, इसको ऐसे रिलेट करके समझ लो, लिखना नहीं है नोट्स में. फॉर एग्जाम्पल, इफ वी ऑल आर एग्रीकल्चर्स, किसान है, इफ वी ऑल आर पीजेंट्स, एंड इफ देर इज गुड प्रोडक्शन, गुड एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, सो वी विल हैव सेविंग्स, सेविंग्स होगा हमारे पास, एंड वी कैन इन्वेस्ट दीज सेविंग्स, वी कैन स्टार्ट एनी न्यू हैंडीक्राफ्ट आर्ट ऑल्सो. हम अपनी सेविंग्स को ही तो इन्वेस्ट करते हैं, मेरी बात समझो, सेविंग हमारे पास नहीं होगी तो क्या हम किसी दूसरे बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकते हैं, नहीं, गॉट इट, आवर सेविंग्स इज हेल्पफुल इन प्रमोशन ऑफ एनी अदर बिजनेस. जैसे मैं दूसरी कोचिंग में पढ़ाता था, अभी भी कुछ जगहों पे पढ़ा रहा हूं, बट माई सेविंग्स आर हेल्पिंग मी एंड सपोर्टिंग मी टू स्टार्ट माई ओन बिजनेस, अदरवाइज इट वॉज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं था. तो जब पीजेंट गरीब हो जाएगा, उसके पास सेविंग नहीं होगी, तो वो हैंडीक्राफ्ट को नहीं प्रमोट कर पाएगा. दूसरी चीज, जब हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री डिक्लाइन होगी तो क्या बढ़ेगा, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी बढ़ेगी, और जो हैंडीक्राफ्ट्समैन बेरोजगार हो गए उनके पास ऑल्टरनेट क्या हो सकता है, एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर की तरफ वो जा नहीं सकते, एग्रीकल्चर ऑलरेडी क्या कर रहा है, इट इज नॉट परफॉर्मिंग वेल, तो व्हाट विल हैपन, अनएम्प्लॉयमेंट विल इंक्रीज एज अ रिजल्ट. एग्रीकल्चर में अनएम्प्लॉयमेंट पहले से ही, हैंडीक्राफ्ट में भी अनएम्प्लॉयमेंट आएगा, सो दिस विल just this is making a cycle, and this cycle will do what, will create massive unemployment in India.
मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट से क्या होगा? रूरलाइजेशन ऑफ इंडिया विल बी प्रोमोटेड। गॉट इट? रूरलाइजेशन ऑफ इंडिया होना क्या चाहिए था? अर्बनाइजेशन ऑफ इंडिया। हो क्या रहा है? रूरलाइजेशन ऑफ इंडिया, राइट? Poverty will be promoted, impoverishment will be promoted, and all this is the result of British economic policies. ये सब आपको याद रखना है, ये सारा आर्टिफिशियल है। ओके, तो यू कैन राइट हियर मैसिव, राइट दिस अनएम्प्लॉयमेंट। इससे क्या होगा? अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। अनएम्प्लॉयमेंट केवल ऐसे वर्ड लिख लो, आप रिलेट कर लोगे। अनएम्प्लॉयमेंट, इससे क्या होगा? रूरलाइजेशन, रूरलाइजेशन ऑफ इंडिया, दिस विल बी प्रोमोटेड। रूरलाइजेशन ऑफ इंडिया, इससे ये भी होगा। अनएम्प्लॉयमेंट विल इंक्रीज, रूरलाइजेशन ऑफ इंडिया विल इंक्रीज, इससे रूरलाइजेशन ऑफ इंडिया भी बढ़ेगा। अनएम्प्लॉयमेंट विल इंक्रीज, रूरलाइजेशन ऑफ इंडिया विल इंक्रीज। ठीक है, राइट? थर्ड पॉइंट, पॉवर्टी और you can say impoverishment will increase. Clear? Write a conclusion, and the conclusion is, write a conclusion, and the conclusion is, okay, conclusion is, right, okay, decline of handicrafts in India was not a natural phenomenon. Decline of handicrafts in India was not a natural phenomena. Decline of handicrafts in India was not a natural phenomena, right? It was man-made or artificial. 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 Got it? Decline of handicrafts in India was not a natural phenomena. It was what? Man-made or artificial. Clear? Many baat samajh? So this class was also dissatisfied. What about the middle class? Yes. Definition of रूरलाइजेशन देखो, सिंपली मीन्स व्हाट? देखो, रूरलाइजेशन का मतलब क्या होता है? रूरलाइजेशन मीन्स हियर, फॉर एग्जांपल, व्हेन वी टॉक अबाउट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है ना? So what will happen in growth and development? What will be? For example, a rural center. Okay, when there will be development of trade and commerce, when economic activities will diversify, when crafts will diversify, so that rural center क्या होता है वो? Gradually it will develop. Okay, it will develop into a semi-urban settlement. Gradually it will develop into a urban settlement, and this process will take place only when these villages will get prospered. ठीक है ना? अगर वो prospered नहीं होंगे तो माइग्रेशन होगा, ध्यान रखो इस बात का, ठीक है? और माइग्रेशन होने की वजह से वहां ग्रोथ और डेवलपमेंट और भी ज्यादा अफेक्टेड होगा। मेरी बात समझ गया? सो इट इज गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट, टू प्रोवाइड डेवलपमेंट इन सच एरियाज। तो इससे क्या होगा? माइग्रेशन विल स्टॉप। It is the government responsibility to give official help and support so that there should be the diversification of economic activities in those areas. ठीक है ना? तो this will help them in making progress. And what is happening during the British rule? Ruralization is being promoted. इसका मतलब एक और है कि the already popular urban centers, now they were declining. Urban centers were declining. ठीक है? The trade and commerce in those urban centers was being affected. Urban center was declining, trade and commerce was being affected. ठीक है? ये क्या है? This is also the process of ruralization. मेरी बात समझ गया आकाश? अर्बन सेंटर्स का डिक्लाइन हो जाना, ठीक है? काशी, मथुरा, राइट? You can say that in South India, okay, there were many urban centers, important urban centers. ऑप्शनल में मैंने क्वेश्चन में डिस्कस भी किया है, ठीक है? आपने वो वीडियोस देखी? एक पार्ट का मैंने डाला है एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, अदर सेगमेंट्स आर आल्सो देयर। यू मस्ट राइट आंसर ऑफ दोज क्वेश्चंस, उसको देखो और नोट्स में लिख लेना। वो 6 क्वेश्चंस जो आप लिखोगे उसमें से प्रीलिम्स में 2 क्वेश्चन आने हैं, आई एम डैम श्योर फॉर दिस, ठीक है? क्योंकि जीएस मेंस में भी उन्हीं एरियाज को टच किया आपने, ऑप्शनल्स में भी उन्हीं एरियाज को टच किया। इसका मतलब जो लोग क्वेश्चन पेपर बैठ के बना रहे हैं इस समय, उनका वो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उनके लिए सबसे
पसंदीदा टॉपिक है, ये बात समझ लो। जीएस में भी दे हैव टच द सेम एरिया, ऑप्शनल आल्सो दे हैव टच द सेम एरिया। तो व्हाट यू हैव टू डू, पल्लवाज, ये पूरा जो एनसीईआरटी का चैप्टर है ना, 300 टू 750 एडी, चैप्टर नंबर 24, फार साउथ, एक्सट्रीम साउथ, दक्कन रीजन, जो मैंने पहले भी बताया था, लेटर मौर्यन फेज में क्या डेवलपमेंट है, द अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस पार्ट, ठीक है, पोस्ट गुप्ता और अर्ली मेडाइवल फेज के क्या डेवलपमेंट्स हैं, ठीक है। तो अभी तो फिलहाल उस वीडियो से आप नोट कर लोगे, और आई विल स्टार्ट माई क्लासेस ना, जब इस बार मैं पढ़ाऊंगा ना एंशिएंट मेडिवल कल्चर, उसमें एक नया पार्ट में ला रहा हूँ, आर्ट एंड कल्चर, वहां पे केवल और केवल इन्हीं एरियाज पे मैं फोकस करने वाला हूँ जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। वहाँ बहुत ज्यादा बेसिक हम नहीं पढ़ेंगे आर्ट एंड कल्चर वाले मॉडल, बट आई विल फोकस डायरेक्टली दोज एरियाज विच आर नाउ रेलिवेंट फॉर एग्जाम, ठीक है ना। तो उस पर काम करूंगा, हेल्प होगा आपको, ठीक है, यू आर गोइंग टू गेट हेल्प, ठीक है। सारा पॉसिबल नहीं है मेरे लिए, राइट, बट स्टिल हिस्ट्री में तो आपको काफी हेल्प करा दूंगा मैं, राइट। चलिए, तो हैव यू गॉट दिस, एचपी, ये एचपी है कौन भाई, नाम लिख दिया करो, है ना, हाउ शुड आई एड्रेस यू, ये नहीं नहीं, देयर इज वन मोर स्टूडेंट हरी प्रिया, तो मुझे लगा इफ सी एचपी, नहीं, चलिए भाई। एंशिएंट मेडिवल कल्चर देखो हम स्टार्ट करेंगे, विल स्टार्ट, पहले टारगेट क्या है, वर्ल्ड हिस्ट्री देखो 1 और 2 क्लासेस में फिनिश हो सकता था, बट मैं उसमें थोड़ा सा एक्सटेंशन ले रहा हूँ। वाई आई एम टेकिंग एक्सटेंशन, कि कुछ बेसिक आइडियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स आपके और भी ज़्यादा क्लियर हो जाए, ठीक है ना। तो वंस आई विल फिनिश दिस वर्ल्ड हिस्ट्री, ओके, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री विल बी इन कॉन्टिन्यूअंस, ठीक है ना। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के बाद देर आर चांसेस कि हम एंशिएंट मेडिवल कल्चर स्टार्ट करेंगे इसी टाइम पे, ऑन द सेम टाइम वी विल स्टार्ट एएमसी, और जो इवनिंग वाला हमारा टाइम है ना वर्ल्ड हिस्ट्री वाला, ठीक है ना, उस वाले टाइम पे हम आर्ट एंड कल्चर स्टार्ट करेंगे। मेरी बात समझ गया ना। तो ये दोनों पैरेलल चलेगा। अगर आप पूरा फाउंडेशन पढ़ना चाहते हो तो मॉर्निंग वाले में पढ़ो, अगर आपने पहले से पढ़ रखा है, हालांकि इस बार वो फाउंडेशन काफ़ी चेंज हो जाएगा, मेरे कभी भी 2 लेक्चर्स एक जैसे नहीं होते हैं, वो बदल जाते हैं, तो फायदा होगा आपको, है ना। कभी भी मेरे क्लास नोट्स उठा के देखोगे, नो टू, द क्लास नोट्स ऑफ नो एनी 2 बैचेस आर सेम, कभी एक जैसा नहीं मिलेगा, सो ऑब्वियसली इट विल चेंज। तो आर्ट एंड कल्चर इन द इवनिंग सेशन, एएमसी इन द मॉर्निंग सेशन। तो दो स्टूडेंट्स हु हैव ऑलरेडी डन एएमसी दे कैन ज्वाइन आर्ट एंड कल्चर, ठीक है। जो फाउंडेशन में भी आना चाहते हैं वो एएमसी में आ जाए, ठीक है ना। Got it? And we will read in details. Details में पढ़ने जा रहे हैं because that all those sessions will be recorded also. Okay, so we will read in detail whatever we are going to study. और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन डिस्कशन, बिकॉज तब तक दिसंबर आ ही जाएगा होपफुली। तो उस समय जो आप एमसीक्यू डिस्कस करोगे वो आपको याद भी रहेगा एग्जाम तक, ठीक है ना। तो आपको दोबारा रिवाइज नहीं करना पड़ेगा। तो ये पूरा का पूरा ऐसे मैंने कुछ डिजाइन किया है, ठीक है। हम्म, उसका देखते हैं, कुछ टाइम मैनेजमेंट करते हैं, क्योंकि एक दो मतलब प्रोजेक्ट्स हैं मेरे पास, तो उनको भी पैरेलल करना पड़ेगा, राइट, बिकॉज, ठीक है। ये क्या है, दिस प्रोग्राम इज फॉर, okay, the purpose is completely different, na. The purpose is not money making in these classes. Recordings will also be very available at very cheaper rates, ठीक है ना, बहुत मतलब ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस तक जा सके, तो ये पर्पज है, ठीक है। चलिए, ये बात आप समझ गए ना। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस वन मोर पार्ट, राइट दिस, व्हाट अबाउट द एजुकेटेड क्लास, राइट दिस, एजुकेटेड इंडियन क्लास, एजुकेटेड इंडियन क्लास, बेसिकली मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, okay, educated Indian class. Are they dissatisfied by the colonial rule in India? Tell me yes or no. Are they dissatisfied by the colonial rule in India? Hmm. Hmm. Exactly. देखो, ये यहाँ जो कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है और ध्यान से समझना है। देखो, एजुकेटेड इंडियंस, पहली चीज क्या है कि व्हाट इज द ब्रिटिश ऑफिशियल पॉलिसी with respect to the administration? What is their official policy? Okay, are they giving the equal role to the Indians and British in the administration? No, they are discriminating with the Indian people. They are saying what? That Indians, Indians will be given only subordinate roles, right? This Indians will be given only
subordinate roles in the administration. Subordinate roles in the administration. Indians will be given only subordinate roles in the administration. It means super boss and boss will always be British. Super boss and boss will always be British, and Indians will work under British people. ठीक है, ये इंटेलेक्ट और कैपेबिलिटी का मामला नहीं है. आपका बॉस हमेशा कौन होगा? ब्रिटिश होगा. ब्रिटिश ऑफिसर विल बी योर बॉस. क्लियर? इज दिस अ काइंड ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन आल्सो? बॉस हमेशा ब्रिटिश होगा. वाइट रेसिस पीपल, इट शोज योर रेशियल मेंटालिटी. यू आर थिंकिंग इंडियंस आर inferior. They are not fit for high administrative offices. So this also reflects, right? This also reflects the racial superiority mindset of British. Racial superiority mindset of British. They are considering Indians as inferior. Very simple. They are considering Indians as inferior. Clear? They are not considering Indians as fit for the high administrative jobs or the offices. They are considering Indians as the inferiors. Indians को क्या मान रहे हैं? Inferior मान रहे हैं. Got it? That is one of the most important point here, right? Indians will be given only subordinate roles in the administration. Boss and super boss will always be British. Example क्या है? That is given in your NCERT book, that in military system of administration, no any Indian can have or can hold द हायर ऑफिस देन द सूबेदार. सूबेदार से ऊपर की रैंक आपको नहीं दी जा सकती कभी भी मिलिट्री में. ये कितनी बड़ी बात है? एनसीईआरटी बुक राइट्स. सो राइट दिस पॉइंट, दैट इन मिलिट्री सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, राइट, इन मिलिट्री सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, एग्जाम्पल लिख लेना, एग्जाम्पल, बिकॉज दिस इज गिवन इन एनसीईआरटी बुक. इन मिलिट्री सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, नो एनी इंडियन could, in military system of administration, no any Indian could hold the office higher than the office of Subedar. Okay, higher than the office of Subedar. No in Indian could hold office higher than the office of Subedar. Will it create a sense of dissatisfaction among the minds of Indian educated class? Yes or no? Yes. And what about civil services? Were they open from the beginning? No. उसमें भी एक डेवलपमेंट है. ठीक है, दे वर नॉट ओपन फॉर द इंडियंस फ्रॉम द बिगिनिंग. उसमें रिलैक्सेशंस अलग अलग टाइम में दिए गए. व्हेन आई विल डिस्कस दिस टॉपिक अलग से बताऊंगा तो आप उस बात को समझ पाओगे. सो राइट दिस पॉइंट, दैट इन सिविल सर्विसेज आल्सो, राइट, इन इंपीरियल सर्विसेज, उस समय उसको क्या कहते थे? इंपीरियल सर्विसेज, राइट. द इंपीरियल सर्विसेज आल्सो, इंडियंस वेर नॉट गिवन, इंडियंस वेर नॉट गिवन opportunity like British to serve. Okay, Indians were discriminated. सीधा लिख लो, वर्ड सेव करना है जहां पे जितने छोटे सेंटेंसेस बना सको उतना हेल्प है. Indians were discriminated. Here also Indians were discriminated. Here also Indians were discriminated. यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन है. थर्ड पॉइंट क्या है? विथ मैकॉलेज मिनट, विथ मैकॉलेज मिनट. मैकॉलेज मिनट जो था 1835, आई ऑलरेडी डिस्कस्ड विथ यू. Is it also a reflection of the colonial mindset and the racial superiority mindset of the British people? Yes, that we want to prepare a class of Indians who are educated and could help British in administering India. Those Indians could occupy the subordinate offices in India. So this was also a kind of mindset. ऐसा mindset है. Okay, to write this point, that write this, Macaulay's announcement that Macaulay's announcement that Macaulay's announcement that we want to create a class of Indian people. Macaulay's announcement that we want to create a class of Indian people. Macaulay's announcement that we want to create a class of Indian people who will be, Macaulay's announcement that we want to create a class of Indian people who will be, okay, Indians by blood, but who will be Indians by blood, but
in their thought and understanding, but in their thought and understanding, that means in cultural sense, in their thought and understanding, they will be completely British alike. They will be completely like the British people, but in their thought and understanding, they will completely be like the British people, and they will help and assist. यहाँ भी ये नहीं है कि उनको सारा सुपर एडमिनिस्ट्रेटिव रोल देना है, नहीं. What is saying that they will help and assist. They will help and assist British people in administering India. They will help and assist British people in administering India. They will help and assist British people in administering India. Got it? They considered Indians as uncivilized. We all अलग से लिख लेना. That British considered Indians as uncivilized. Indians को क्या मानते थे? Uncivilized. That's why they claim what? Civilizing mission theory. तभी तो वो कहते थे कि हम civilizing mission theory पे हैं. They considered Indians as uncivilized. That's why they were claiming civilizing mission theory. Got it? So we can say that educated Indian class was dissatisfied as a result. Okay, this is what? A kind of discrimination. So educated Indian class was dissatisfied as a result. But दूसरी important बात क्या है? That this is the same educated class. अब ये outlook number 1 है. Outlook number 1 is what? Yes, educated class was dissatisfied. Outlook number 1. Right? Outlook number 2. दूसरा outlook क्या है educated class के बारे में? Outlook number 2. You need to understand the concepts in parts. कि कहीं पे भी कोई क्वेश्चन आए तो उसको आप समझ सको. आउटलुक नंबर 2 क्या है? देखो, एजुकेटेड इंडियंस को ये पता था. एजुकेटेड इंडियंस वेयर familiar with, they were familiar with development in Western countries. They were familiar with development in Western countries, right? Western thoughts, liberal thoughts, parliamentary system, rights, individual rights, clear? Progressive system of administration. ये सब चीजें पता थी educated class को. They were familiar with all this. Got it? Progressive revolutions in the West. They were also familiar with this. Progressive revolutions in the West. Got it? So this educated class was familiar with all this. Progressive revolution in the West. Okay. Development in Western countries. Okay. Liberal thoughts, individual rights. ये सारी चीजें पता थी. Okay. And they were also knowing that before British came to in India, India में क्या था? Was India a nation? Yes or no? No. And which kind of political setup was present in India? Absolute monarchical political setup. There was no constitution. Mughal rule was in practice. That is what? Medieval Puritan system was in India. ठीक है? They were knowing this. Now they were also thinking that if British are ruling India, they are already familiar with parliamentary politics. Because in Britain, what is the political system? Constitutional monarchy, parliamentary form of politics. So they thought that this might be possible, that British presence in India will serve as a medium to bring political changes in India. This might be possible that British will provide us help and support in developing a parliamentary system in India. ये possible हो सकता है. मेरी बात समझ गया ना? So they were also believing in what? Civilizing mission theory of the British. उनको कहीं ना कहीं ये दिमाग में लालच था कि ब्रिटिश पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और सिस्टम से फैमिलियर हैं और ब्रिटिश के लीडरशिप में इंडिया में भी ये चीजें इन फ्यूचर डेवलप हो सकती. गॉट इट? सो दिस इज, यहाँ पे एक सॉफ्ट कॉर्नर था ब्रिटिश के लिए, और वो सॉफ्ट कॉर्नर जो है ना, वो एंटी नेशनलिज्म नहीं, दैट इज फॉर अ राइट कॉज, कि शायद ऐसा हो. ओके, सो यू कैन राइट हियर दैट दिस क्लास वाज होपिंग, this class was hoping that this class was hoping that under the leadership of British in India, that under the leadership of
British in India, under the leadership of British in India, okay, in India, right? This might be possible that this might be possible that parliamentary politics. This might be possible that parliamentary politics, okay, or you can say that progressive system of governance could be established in future. Okay, ऐसा इनको लग रहा था parliamentary politics or progressive form of government could be established in future. ठीक है, this might be possible. A progressive form of government or parliamentary system of politics could be introduced in future, and this is the reason for the soft corner. इसीलिए इनके दिमाग में क्या है, सॉफ्ट कॉर्नर. इस बात को आपको समझना है. मेरी बात समझ गया? अब इसका रिफ्लेक्शन कहाँ दिखता है? वेयर वी सी द रिफ्लेक्शन, राइट दिस, द रिफ्लेक्शन ऑफ दिस थॉट, reflection of this thought, where we see reflection of this thought. This is a prelims question also. What I am going to discuss with you, this is assertion and reasoning based question. Assertion और reasoning based question prelims theme भी है. और वो थीम क्या है, समझिए इस बात को. Revolt of 1857. What was the ultimate goal or objective of revolt of 1857? चैट बॉक्स में लिखिए क्या है ऑब्जेक्टिव रिवोल्ट ऑफ 1857 का, क्या उद्देश्य था रिवोल्ट ऑफ 1857 का. एग्जैक्टली ऑब्जेक्टिव ये था, राइट, टू रीस्टोर मुगल पावर इन इंडिया. दिस वाज द ऑब्जेक्टिव, राइट दिस, टू रीस्टोर मुगल पावर इन इंडिया, टू रीस्टोर मुगल पावर इन इंडिया. भारत में मुगल साम्राज्य को वापस लाना. गॉट इट? नाउ टेल मी, दिस ऑब्जेक्टिव इज प्रोग्रेसिव और रेग्रेसिव? ये ऑब्जेक्टिव क्या है? दिस इज प्रोग्रेसिव और रेग्रेसिव? रेग्रेसिव. व्हाई इट इज रेग्रेसिव? क्योंकि अब हमें आगे बढ़ना चाहिए किस सिस्टम की तरफ? प्रोग्रेसिव पॉलिटिकल सिस्टम की तरफ. एंड नाउ इफ वी आर doing this revolt only for the cause of restoring Mughal power, so this is like going back to the medieval Puritan system, पुराने सिस्टम की तरफ वापस जाना, जहां पे जो सिस्टम ऑफ रूल होगा वो क्या होगा? एब्सोल्यूट मोनार्कियल पॉलिटिकल सिस्टम. एंड विल यू लाइक दिस? यस और नो? नो, because you are educated, you are familiar with the western ideas and liberal thoughts, so you will not like this. Clear? So this objective was regressive. Okay, it's like, right, this, it's like going back to the, it's like going back to the medieval Puritan system. It's like going back to the medieval Puritan system, that is absolute monarchical political system. It's like going back to the medieval Puritan system. It's like going back to the medieval Puritan system, that is absolute monarchical political setup. Got it? It's like that, going back to the medieval political system. Okay. Now, what will be the response of educated Indians towards this revolt of 1857? This was the question in prelims. What will be the response of educated Indians? I am giving you three options. They supported a revolt of 1857. They opposed revolt of 1857. They remained neutral during revolt of 1857. वेरी गुड, वेरी गुड. सो राइट दिस, क्वेश्चन पढ़ते वक्त हमेशा सावधान रहना है स्टेटमेंट में. राइट दिस, एजुकेटेड इंडियंस, राइट, एजुकेटेड इंडियंस क्लास remained neutral. This class remained neutral. Educated Indian class, this class remained neutral during this revolt of 1857. The class remained neutral. ये पूरी तरह से क्या रहा? Neutral रहा. In this revolt of 1857, the class remained neutral. Okay, ध्यान रखना है, support या oppose गलत है. They remained neutral. Why they remain neutral? Now you know the answer. Because they were hoping that British presence in India will be helpful in bringing progressive political reforms in India. That is the purpose. अब यहीं से एक और कॉन्सेप्ट में कनेक्ट करके बता दूं. Okay, now what will happen between this period 1857 and 1885? क्या होगा? The same educated Indian class, write this, यहीं पे लिख लो, इससे कनेक्ट रहेगा आपका थॉट. Write this, the same
Exactly. Read this. The same Indian class realized that that the British claims of bringing progressive reforms in India are hollow. Right, this point. The same educated Indian class realized that the British claims, right, of bringing progressive reforms in India are hollow. अंग्रेजों का दावा खोखला है. Okay, and British are mainly focused. British are mainly focused on exploiting India economically. Economically, they are mainly focused. Other exploitation is also there, but they are mainly focused on exploiting Indian people economically. कि ये वादा कुछ और किया और कर कुछ और रहा है, right? They are doing exploitation of Indian people, and this they are doing economically. They are doing this economically. Is that clear? Now what they will do? The same educated Indian class will become the medium. Now they will do what? Criticize. Now they will become critical of British rule in India. अब इनका अप्रोच क्या हो जाएगा? क्रिटिकल. Now they will start criticizing the presence of British rule in India, and the same Indian class become, क्या था इसका नाम? Economic critique of British rule in India. I have already discussed with you. तो ये टॉपिक आप पढ़ चुके हो. दादा भाई नौरोजी, जीवी जोशी, याद है कुछ आया? इकोनॉमिक क्रिटिक ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी. दूसरा क्या होगा? द सेम पीपल will help, read this, they will help in the formation of RPAs in India. The same people will help in the formation of RPAs, regional political associations in India. कब से कब तक है? Between 1830s. 1830s onwards से शुरू हो जाता है. The same people, okay, will become the medium for the promotion of regional political associations in India. And third point, right, इन्हीं को हम कहते हैं अर्ली नेशनलिस्ट. फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, दे विल प्रोवाइड इंपॉर्टेंट रोल. Okay, they will educate and enlighten Indian people. They will provide political awareness among the masses. Okay, the same educated people, they will provide political awareness among the masses. लोगों को बताएंगे कि देखो how British government is exploiting us, कैसे अंग्रेजी सरकार हमें exploit कर रही है. मेरी बात समझ गया ना? So this is the basic understanding about this educated class. Clear? That previously they are thinking that British rule in India will be helpful to bring progressive political reforms. That's why they remain neutral in the revolt of 1857. But after some time they realized their mistake. They were now sure that British are not going to bring progressive political reforms in India. Their main purpose is to exploit India economically. Other forms of exploitation are also there. Now they took this responsibility to promote awareness among the people, and for that they did what? They started doing economic critique of British rule in India. They wrote articles, okay, with facts and data. They presented their opinions or the ideas, and this all happened. Got it? This is called economic critique. The same educated class, okay, will serve as the medium to promote political awareness by making regional political associations, okay, and gradually what will happen? INC will come. INC में भी पढ़े लिखे लोग लीडर्स होंगे, ठीक है, और इस तरह से एजुकेटेड क्लास का एक कंट्रीब्यूशन अलग होगा. द सेम एजुकेटेड क्लास विल ओपन इंडियन नेशनलिस्ट स्कूल्स एंड कॉलेजेस आल्सो. खोलेंगे नेशनलिस्ट स्कूल्स एंड कॉलेजेस वेयर नेशनलिस्ट एजुकेशन विल बी गिवन टू द इंडियन यूथ. ठीक है, तो एजुकेटेड क्लास का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है, और ये बड़ा ही एक मैच्योर रिएक्शन देखने को मिलता है कि कैसे पहले तो हमने अंग्रेजों का जो क्लेम था, मोरल क्लेम, उस पर हमने क्या किया? बिलीव किया. बट वो बात गलत थी, क्योंकि कॉलोनियलिज्म में कोई भी गवर्नमेंट हो, चाहे आप फ्रेंच कॉलोनीज देख लो, चाहे आप डच कॉलोनीज देख लो, राइट, चाहे आप जर्मन कॉलोनीज देख लो, ब्रिटिश कॉलोनीज देख लो, they will always exploit the resources in the colony, the people of the colony. नहीं तो उस कॉलोनी का कोई मतलब नहीं रह जाए. मेरी बात समझ गया ना? इवन ब्रिटिश एक्सप्लॉइटेड अमेरिका, और अमेरिका में सबसे ज्यादा ब्रिटिश ओरिजिन के लोग थे.
We have already discussed this in world history. Clear? So this is the basic definition of colonialism. Now, the next, write this, next group that is dissatisfied was sepoy. Sepoy dissatisfaction. Sepoy dissatisfaction. Yes, this was an important class. Sepoys, class of sepoys. इंडिया में कॉलोनियल एम्पायर को बनाने में सबसे इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन किसका रहा है? सेपॉइस का रहा है. Clear? So the journey is very interesting. First, I am asking you one question, that why Indians joined British Indian Army? What could be the purpose behind this? Why Indians joined British Indian Army? Indians ने British Indian Army ज्वाइन ही क्यों की थी? इसके पीछे क्या रीजन? Exactly. This point is very correct. That they were previously they were serving under local rulers. और लोकल रूलर्स में कब तख्ता पलट हो जाए कुछ कह नहीं सकते, ठीक है. और तख्ता पलट हो जाएगा तो आपको 2 4 10 महीने सैलरी नहीं मिलेगी. मेरी बात समझ गया ना? इट मीन्स लोकल रूलर्स वर फाइटिंग विथ ईच अदर, राइट. देयर वाज नो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी and they were not getting regular salary from the local rulers. Okay, and salary is a good motivation. East India Company will offer them good salary, education for their children. Clear? And they will join British Indian Army. Second factor, what could be the second factor? Batao. Casteism, religion, nepotism in local ruler state. मेरी बात समझ गया ना? Local ruler state and their army. This was seen. Yes, there are some exceptions. कुछ exceptions भी. For example, Mysore army, army of Ranjit Singh. This is exception. क्योंकि उन्होंने सबको incorporate किया था. But mainly what we see, okay, the caste and all this. तो British Indian Army में क्या है? Okay, they don't believe in this idea of untouchability. Okay, so here all are treated equal. मेरी बात समझ गया ना? तो ये एक बड़ा factor है. The people who are serving the British Indian Army, their children will get the education. ठीक है, मिशनरी स्कूल्स में पढ़ सकते हैं, ठीक है, इंग्लिश स्कूल्स में पढ़ सकते हैं वो. जैसे स्टोरी ऑफ अम्बेडकर. अम्बेडकर की पढ़ाई कैसे पॉसिबल हो पाई? मेरी बात समझ गया ना? क्योंकि उनके फादर ब्रिटिश इंडियन आर्मी में थे. तो ये एक बड़ा फैक्टर था, मोटिवेशन था. व्हाट आर द अदर फैक्टर्स? दूसरे फैक्टर्स क्या हो सकते हैं? दैट इंडियन सेपॉइज डोंट हैव द फीलिंग दैट इंडिया इज अ नेशन. दे वर वर्किंग अंडर द रीजनल पावर्स. ठीक है, अपने स्टेट को ही अपना देश समझ बैठे हैं, जबकि देश क्या है? हिंदुस्तान, इंडिया. तो जब तक आपके अंदर वो सेंस ऑफ नेशनलिज्म नहीं होगा, ठीक है, तो आप आसानी से यू विल फेल प्रे टू द कॉलोनियल पॉलिटिक्स. ठीक है. और चौथी सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इंडियंस की दे आर एकस्टम टू देयर कल्चरल बिलीफ्स एंड प्रैक्टिसेस. और हमारे यहाँ एक वर्ड होता है नमक हलाल. इंडियंस जिसका नमक खाते हैं उसके साथ गद्दारी नहीं करते. अंग्रेज क्या, ठीक है हमारा नमक खाओ, ठीक है. तो व्हाट हैपेंड? इंडियंस ज्वाइंड ब्रिटिश इंडियन आर्मी एंड व्हाट दे डिड? दे फॉट फॉर कंपनी. ओके, and they remained loyal for the company. ठीक है, for a long period of time. बहुत लंबे समय तक वो कंपनी के लिए लॉयल रहे and they helped in the expansion of British rule in India. But gradually one time will come when the sepoys will also realize कि हमने गलत पार्टी चूज कर ली. क्यों गलत पार्टी चूज कर ली? Because sepoys are what? Peasants in uniform. मेरी बात समझ गया ना? सेपॉइज कहाँ से आते हैं? विलेजेस से आते हैं. और विलेजेस में जब एग्रीकल्चर डिक्लाइन होगा, इम्पोवरिशमेंट आएगा, हाई रेट ऑफ रेवेन्यू ब्रिटिश अथॉरिटीज एक्सप्लॉइट करेंगे, टॉर्चर करेंगे विलेजर्स को. सो दीज सेपॉइज आर आल्सो व्हाट? peasants in uniform. So they will realize their mistake. Clear? When the Christian missionaries will make efforts to promote Christianity, okay, in cantonment areas, they will realize their mistake. Or finally, okay, the issue of grease cartridges, okay, that will be one of the immediate reason for the, you can say, dissatisfaction of the peasants. There is also some other reason, general service enlistment act, and there are so many issues. Okay, so we will discuss this topic in the next class, that what were the reasons for the dissatisfaction of the sepoys. And after this, after reading all this, I will just draw a sketch of names of some important peasant revolt, tribal revolt. We will also discuss the name of the leaders there. Okay, and we will also discuss that how we can write answer
with a generalized approach by using the common points. And then we will enter into the revolt of 1857. We'll discuss the main causes, immediate causes, the course of the revolt, what happened during the course of the revolt, the impact of this revolt, and finally, what were the important administrative changes that were introduced after this revolt of 1857. So we are going to discuss this in the very next class. ठीक है? Any question? Any one of you? है कोई question? Hmm. Hmm. Exactly. हम्म। कल मैं ट्रिक बताऊंगा, आपको डेप्थ में नहीं करने की जरूरत है। वो टॉपिक कल कल कम से कम 50 रिवोल्ट्स एंड रिबेलियंस आप तैयार कर लोगे, वो भी 20 मिनट्स में। आई विल मेक अ चार्ट एंड आई विल टेल यू, जैसे आप संथाल रिबेलियन लिखते हो, संथाल इज ट्राइब रिवोल्ट। ट्राइब रिवोल्ट में इश्यूज क्या होंगे? द ट्राइबल कंसर्न्स, यू ऑलरेडी नो द ट्राइबल कंसर्न्स, ठीक है ना? तो यू मस्ट नोट ये संथाल रिवोल्ट हुआ कब, हु आर द इंपॉर्टेंट लीडर्स, and the causes you all know, the tribal concerns you all know. Then I will discuss a few more concepts that when tribals were fighting with British, how they were fighting. Okay, so that common concept you will use in that answer. ठीक है ना? So for different questions, you don't need to prepare different answers, right? We need to know some facts. जैसे संथाल रिबेलियन आया तो हमने इंट्रोडक्शन में लिख दिया कि संथाल रिबेलियन इन विच एरिया, विच ईयर, हु आर द इंपॉर्टेंट लीडर्स. इन मेन बॉडी वी विल राइट व्हाट, कॉमन पॉइंट्स. और तभी आप इफेक्टिव आंसर लिख पाओगे, टाइम बाउंड मैनर में लिख पाओगे, वर्ड लिमिट में लिख पाओगे. आंसर राइटिंग इज ऑल आर्ट. ठीक है, नॉलेज एक अलग बात है, प्रीलिम्स के फैक्ट्स याद होना अलग बात है, बट आंसर लिखना पूरी तरह से आर्ट है. और दूसरी चीज है योर प्रैक्टिस ऑन दिस आर्ट. आप कितना प्रैक्टिस करते हो. इट्स नॉट ओनली प्रैक्टिस ऑन पेपर एंड राइटिंग टेस्ट सीरीज, प्रैक्टिस इन योर माइंड. ठीक है, कि बैठ के सोचा कि हाँ कौन कौन से पॉइंट्स आ सकते हैं, रफ स्केच ड्रॉ कर लिया कि कौन कौन से पॉइंट्स आते हैं. दिस इज ऑल्सो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस. ये भी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस है. कोई भी क्वेश्चन लेके एक रफ पेपर लेके बस शॉर्ट में पॉइंट्स लिखो कि इसमें कौन कौन से पॉइंट्स आ सकते हैं, इतना ही करना है. एंड व्हेन यू आर एबल टू डू दैट, यू विल फाइंड दैट अल्टीमेटली यू आर एबल टू राइट आंसर. एग्जाम में कभी भी हम लैंग्वेज बहुत अच्छी होगी या बहुत अच्छी इंग्लिश लिखने वाले हैं, ऐसा कुछ नहीं हो पाता एग्जाम में. आप सिंपल इंट्रोडक्शन लिखोगे, अपने पॉइंट्स को जितना कंसाइज वे में, सिंपल वे में लिख पाओगे, ठीक है, उतना बेहतर मार्क्स पाओगे. दिस इज द अल्टीमेट रियलिटी. ठीक है, तो एक जो माया है, माया क्या है पता ही है आपको, बेस्ट आंसर. ठीक है, आंसर ऐसा होना चाहिए, आंसर में आपको दूसरे बच्चों से कुछ अलग करना है तभी आप आईएएस बन पाओगे. ये सब शुद्ध बकवास है. ठीक है, इफ यू विल परफॉर्म इन एन एवरेज मैनर, यू विल बी द टॉपर. ठीक है, कोई विशेष नहीं करना है. ठीक है, दूसरे लोग दूसरे प्लेनेट से थोड़ी ना आए हुए हैं, हमारे ही जैसे लोग हैं. ठीक है, और मेंस तो वही लिखेगा जो प्रीलिम्स पास करेगा, आप ये भी सोचो. ठीक है, बहुत सारे अच्छे लोग हैं जिनका मेंस पे अच्छा कमांड है बट प्रीलिम्स नहीं हो पा रहा है. तो बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं आपके सिलेक्शन में. उसके बाद नेचर ऑफ क्वेश्चन, यूपीएससी यूज टू चेंज इट्स पैटर्न फ्रिक्वेंटली. 2-3 साल के बाद अपने पैटर्न में थोड़ा सा बदलाव कर देते हैं. ठीक है, तो सो मेनी फैक्टर्स आर वर्किंग टुगेदर. ओके, तो वो हमें स्पेसिफिक बनने की कोशिश नहीं करनी. जनरल अप्रोच, परफॉर्म एवरेज इन ऑल द पेपर्स एंड यू विल बी इन टॉप 100. यही फॉर्मूला है. गॉट इट? मेरी बात समझ गए आप? तो इसी ट्रिक को याद रखो. और थोड़ी क्लास मुझे पता है कि मैं आराम आराम से पढ़ा रहा हूँ, वो मैं डेलिबरेटली कर रहा हूँ, जानबूझ के कर रहा हूँ. और इसका फायदा ये होगा कि आपको ये सारे टॉपिक्स दोबारा नहीं पढ़ने पड़ेंगे. योर टास्क ऑफ सेल्फ स्टडी इज ऑल्सो ओवर हियर एंड दैट इज अ गुड थिंग. ठीक है, ये अच्छी बात है कि कहीं हमने थोड़ा ज़्यादा टाइम दिया बट हम सेल्फ स्टडी से बच गए. और प्लस आपके जो क्लास नोट्स हैं, आप इन्हीं को बार बार रिवाइज करोगे तो आप एक नोट्स पे फोकस कर पाओ. ध्यान रखना मैं क्या कह रहा हूँ, मल्टीपल सोर्सेज पे आपको जंप नहीं करना पड़ेगा. एक दूसरा सोर्स आपका क्या होगा, एमसीक्यू का बुक, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का बुक, जो आप प्रैक्टिस करना शुरू कर दो. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि the chapters which I am finishing, practice all the questions. And when I will discuss in videos all the PYQs, तो you will be active in that stage. जब आप उस वीडियो डिस्कशन में पार्टिसिपेट करोगे और फैक्ट्स आपको पहले से पता होंगे तो इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग एंड दिस विल इंकरेज यू, दिस विल बूस्ट योर कॉन्फिडेंस. इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा. गॉट इट? और वो कॉन्फिडेंस बूस्टर विल बी हेल्पफुल इन योर एग्जाम. आपको लगेगा हाँ मैं क्वेश्चन कर ले रहा हूँ, तो वो
that sense of confidence is also needed because before exam we start losing our confidence. एक डर जो हमारे दिमाग में स्ट्राइक करता है वो करता है कि अभी यार इकोनॉमिक्स भी नहीं हो पाया, पॉलिटी भी नहीं हो पाया, हिस्ट्री भी नहीं हो पाया, और ये डर, दिस फियर विल स्ट्राइक एवरी ईयर. ऐसा नहीं कि आपने 2 साल तैयारी कर ली, 3 इयर्स तैयारी कर ली तो अब ये डर नहीं आएगा ना. दिस इज साइकोलॉजिकल फियर. सो हाउ टू फाइट विद दिस साइकोलॉजिकल फियर, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. दुश्मन कई होते हैं ना, ठीक है. कुछ लोग साइकोलॉजिकल वॉर करते हैं, कुछ लोग सामने से आके वॉर करते हैं. तो यू मस्ट बी स्किल्ड इन ऑल द ओके आर्ट, कि जो डर जहां से जैसे आ रहा है उसको कैसे हमें काउंटर करना है. गॉट इट. ओके, चलिए तो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास. थैंक्स टू ऑल ऑफ यू. वेलकम. यस, इज देयर एनी क्वेश्चन? नो, चलिए.